at the 2017 Global Entrepreneurship Summit, inaugurated by Prime Minister Modi and leaders have joined hands. And now, the journey continues. The 4th EAI Summit 2025 happening in Delhi. Join the movement, be a part of India's entrepreneurial future. The Entrepreneurs Association of India, a movement making entrepreneurship accessible for all. Working since 11 years, globally recognized, EAI has been invited by the US, China, Israel, Russia, Qatar and the Netherlands and several foreign countries, hosting events and engaging young entrepreneurs to impact the next generation. 100 plus startup yatras, 60 plus Krishi Samvads, workshops on agripreneurs and 300 plus workshops across India. From Delhi, Hyderabad, Pune, Mumbai, Kolkata, Roorkee, Gwalior, Tirupati, Haryana, Jharkhand. Drafted Bihar's startup policy and set up a pre-incubation center in Delhi, Lucknow and Patna. By bringing government support, mentorship and opportunities to grassroots and emerging entrepreneurs everywhere, we are committed to empowering India's district-level economic ecosystem. Working closely with NITI Aayog, Ministry of Electronics and IT, Startup India, Ministry of Agriculture, Ministry of MSME, Department of Science and Technology, and several other central and state government ministries. We also work closely with the research institutions like CSIR and DRDO. We have signed several MOUs with organizations and developed countries, appreciated by multiple governments where 1.5 lakh plus youth are engaged through direct introductions. Moreover, we regularly organize hackathon and export-import meetups. Our Secretary General represented as Investment Advisor at the 2017 Global Entrepreneurship Summit, inaugurated by Prime Minister Modi and Ms. Ivanka Trump. Our offices have been visited by several ambassadors, including the US President. In just 3 EAI summits, 15,000 plus entrepreneurs, investors, and leaders have joined hands. And now, the journey continues. The 4th EAI Summit 2025 happening in Delhi. Join the movement, be a part of India's entrepreneurial future. Good morning to one of all present here. This is just to make an announcement that the chief guest will be here soon. I repeat, the chief guest will arrive soon. Movement making entrepreneurship accessible for all. Working since 11 years, globally recognized EAI. China, Israel, Russia, Qatar and the Netherlands and several foreign countries, hosting events and engaging young entrepreneurs to impact the next generation. 100 plus startup yatras, 60 plus Krishi Samvads, workshops on agriculture, 300 plus workshops across India. From Delhi, Hyderabad, Pune, Mumbai, Kolkata, Roorkee, Gwalior, Tirupati, Haryana, Jharkhand. Drafted Bihar's startup policy and set up a pre-incubation center in Delhi.
studying under the startup, and it was a very glad for me and my team also as a exhibitor in this event. And thanks to all, and especially thanks to was a very glad for me and my team also as a exhibitor in this event. And thanks to all, and especially thanks to Abhishek sir for just giving me paper question. Thank you so much. So Andhra Pradesh? Yes.
A very good morning, esteemed dignitaries, visionary entrepreneurs, industry leaders, and honored guests. First of all, I would like to call our chief guest, Shri Sardar Manjinder Singh Sirsa, Honorable Minister of Industries, Food Supplies, and Environment, to please come up on stage and have a seat. Next, can we please have Mr. Vikash Pritam to come up on stage and have a seat? Mr. Amitabh Verma, please come up on stage and have a seat. Our guest, Mr. Arun Kumar Sharma, please come up on stage and have a seat. Next, our guest, Mr. Pratap Somvanshi, please grace your presence on the stage. Next, we would like to have Mr. Manoj Kumar Singh to please come up on stage and grace our stage with your presence. Mr. Abhishek Kumar, President of EAI, please have a seat. Good morning everyone, we welcome you all. It gives me immense pride to welcome you all to the 4th Bharat Entrepreneurship Summit 2025, organized by the Entrepreneurs Association of India here at the historic NDMC Convention Center, New Delhi. This summit is not just an event, rather it is a movement. Every year, it is built by the tireless efforts of volunteers from across Indian states who spend almost 3 months rigorously preparing, reaching out, and curating what you see today. That collective energy, that unity of purpose, makes this gathering truly special. This is not just a gathering, rather a celebration of Bharat's entrepreneurial spirit. A spirit that is writing the story of a new India. एक ऐसा भारत जो विकसित होने की राह पर है। इस मंच पर सिर्फ उद्यमिता का सम्मान नहीं होता, बल्कि भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही है। Now, I would like to formally proceed with the inaugural session. Ladies and gentlemen, may I please request everyone to kindly rise for the national anthem.
To mark the beginning of the grand seminar, we now move to the traditional lighting of lamp, a symbol of wisdom, prosperity, and new beginnings. May I invite our esteemed dignitaries to kindly do the honors. Thank you, sir. I now request Mr. Abhishek Kumar, President of the Entrepreneurs Association of India, to welcome our chief guest, Shri Sardar Manjinder Singh Sirsa, Honorable Minister of Industries, Food Supplies and Environment, Forest and Wildlife, Government of NCT of Delhi, with a shawl. Now, I request Mr. Gagan Kumar to welcome Mr. Vikash Preetham, Advocate, Supreme Court of India, social activist, with a straw. Next, I invite Mr. Nilanjan Singh to welcome Mr. Amitabh Verma, ex-banking secretary, Government of India, with a stroll. Next, I request Mr. Omkar Singh to welcome Mr. Arun Kumar Sharma, ex-DGP Gujarat, Chairman of Forbes Global Prop India, to welcome with a stroll. Now, I request Mr. Nitish Kumar to welcome Mr. Prakash Somavanshi, Managing Editor, Hindustan Hindi, Delhi, to honor sir with a stroll. Now, I request Dr. Ashok Samraj to welcome Mr. Manoj Kumar Singh, ex-Chief Secretary, Uttar Pradesh, to grace him with a stroll. Moving forward to the booklet launch. At this point, it is my privilege to invite our dignitaries for the launch of the official summit booklet, The Unstoppable Bharat, Glimpse of Entrepreneurs Driving a Change, a compendium of insights, initiatives, and voices of change of the awardees and entrepreneurs chosen for this year from all the states of India. This defines this year's Entrepreneurs Summit. The cover,
carries a QR code that instantly brings the book to live-taking viewers directly to the video with all information about EAI. All you need to do is scan the QR code with the help of your mobile camera. This innovation has been built by one of the awardee startup, Secure Edge Fintech Private Limited, a true example of how technology and entrepreneurship comes together to create massive impact. Moving forward, now I please request Mr. Abhishek Kumar, President of the Entrepreneurs Association of India, to deliver the welcome address. So, good morning everyone. Good morning everyone. नमस्कार और आप सबको आपका सप्ताह फिर से हम लोग के एनुअल भारत उद्यमिता सम्मेलन भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट में स्वागत है. ऑनरेबल मिनिस्टर सर, एस्टीम्ड गेस्ट्स, रेस्पेक्टेड इंडस्ट्री लीडर्स, विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, all the audiences who are seeing this live on YouTube, Namaskar and a very very warm welcome to each and every one of you. It's an honor and privilege on behalf of Entrepreneur Association of India to welcome you at this integration of all the states, Indian states, entrepreneurial ecosystem. हम लोग यहाँ पे देश की राजधानी नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं टू शोकेस द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, टू शोकेस द स्ट्रेंथ ऑफ इनोवेशन, टू शोकेस द कैपेबिलिटी जो कि हमारा देश पिछले कुछ दशकों में बनाया है. इंडिया एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम इनोवेशन में कुछ सालों से आपने देखा होगा बहुत आगे निकला. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्रिएटिविटी, द इनोवेशन, द इंटेलेक्चुअल कैपिटल दैट वी हैव, द एनालिटिकल माइंडसेट दैट वी हैव. शायद इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम आत्मनिर्भर भारत का है, अ सेल्फ रिलायंट इंडिया. अभी तक हम लोगों ने न्यूज में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सर हम लोगों ने सुना कि 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हुए. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पिछले लास्ट 8-10 सालों में स्टार्टअप की पॉलिसीज आई. यूथ के एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा, राइट फ्रॉम कृषि मंत्रालय टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सब के अलग अलग स्कीम्स आए. इंडिया उस लेवल पे है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. एक मेजर जो आइडिया होल्डर्स मैं कहूंगा वो स्टार्ट कर चुके. अब समय आ गया है जब हम स्केल अप करें. अब समय आ गया है जब हम सब सीड कैपिटल या बूटस्ट्रैप अपनी पूंजी से भी शुरू करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको हम बढ़ाए कैसे, उनके मार्केट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ले जाए, उनके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, उनके प्रोडक्शन लाइन को कैसे डाइवर्सिफाई करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए. ये सारी चीजों को देखते हुए सर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट पीछे ना रहे. अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु का, गुजरात से अरुणाचल का, वहां की टेक्नोलॉजी यहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में हो सकती है, उत्तराखंड का कर्नाटका में हो सकता है. किसी एंटरप्रेन्योर का मार्केट
उड़ीसा में है, वो राजस्थान में उसका प्रोडक्ट वहां पे जा सकता है। तो एक इंटीग्रेशन की जरूरत थी। कोई एक पार्टनर वो ऑलरेडी अकेले कर रहा हो पंजाब में, उसको कोई पार्टनर मिल जाए राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी स्टार्टेड एंड फाइनली वी आर अगेन एट द नेक्स्ट भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट। अब मैं इस पे आता हूं, कैसे हम लोगों ने इसको शुरू किया। हम लोग कैसे EI के जो लास्ट 10 साल पूरे हुए उसको हम लोगों ने शुरू कैसे किया। सर वी हैव बीन टू 2013 से वी हैव बीन टू ऑलमोस्ट 100+ डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टअप यात्रा वर्कशॉप किया। हमने यात्रा वर्ड जस्ट टू मेक अ फैंसी वर्ड 10 साल 12 साल पहले 2013 की बात कर रहा हूं। अलग अलग पार्टनर्स बनते गए, स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम जब शुरू हुआ और ज्यादा जागरूकता बढ़ी, इंफॉर्मेशन बढ़ा। बट 2013 में तो वेरी डिफिकल्ट। स्टार्टअप के आज के डेट में अगर डेटा देखें तो तकरीबन जो 750 के आसपास हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में DICs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। हम लोगों का सर सर्वे, बिकॉज हम लोग सारे स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो DICs भी जागरूक हो चुके हैं। दे अंडरस्टैंड कि भाई स्टार्टअप ये होता है, कुछ नया करो, कुछ जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो अब ज्यादा एक्टिवली बता पा रहे हैं, जो पहले नहीं थे। फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक के जो सपोर्ट सिस्टम से जब सर हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना बिजनेस आइडिया लेकर के कहीं कहीं घूम रहे थे, अब वो सिस्टम है। थैंक्स टू द IT रिवॉल्यूशन सबके पास एक्सेस है, एप्स है, मोबाइल्स है, बैंक्स के फोकस जितने कम्युनिकेशंस आते हैं कि हाँ भाई हमारा स्टार्टअप का ये स्कीम है, ऑलरेडी मिनिस्ट्री से टाई अप करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ फाइनेंशियल सिस्टम्स, NBFC सबके चेंज हम लोग को देखने को मिले। तो इस तरह से सर ये जर्नी 10 साल हम लोगों ने पूरा किया। कुछ राज्यों के पॉलिसी का बनाने में, स्टार्टअप नीति बनाने में हम लोगों का रोल रहा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ हम लोगों ने 2017 के स्टार्टअप पॉलिसी को ड्राफ्ट किया। 2017 में जो लॉन्च हुआ 500 करोड़ का फंड के साथ, हम लोगों ने सर किसानों के लिए 2022 में लगा कि सारे पढ़े लिखे तो स्टार्टअप कर रहे, बिजनेस मॉडल बनाना सीख रहे, बट अगर हम एक जिले में 8-10 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको बढ़ाने के लिए काम करें, उनको स्टार्टअप और गवर्नमेंट स्कीम से उनको बिजनेस प्लानिंग में थोड़ा उनके लैंग्वेज में अगर हम लोग मदद करें तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और हर जिले में अगर 10 भी ऐसे हो जाए पर ईयर, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट और माइक्रो लेवल डेवलपमेंट में हो। हम लोगों ने इसके लिए सर शुरू किया कृषि संवाद, और बहुत खुशी की बात है हम लोग 60+ डिस्ट्रिक्ट में सर बिहार, झारखंड और यूपी में हम लोग कवर कर चुके हैं ICR के अटारी के साथ पार्टनरशिप। देन हम लोगों ने सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन पे हमारे कुछ सर हमारे US चैप्टर के कुछ जो हमारे IBM के डायरेक्टर वगैरह है, राकेश रंजन जी, उन्होंने इनिशिएट किया कि IT और AI का एक स्पेशली सेंटर शुरू किया गया 2019 में। हम लोगों ने उनके साथ मिलके डॉक्टर आदिया शुक्ला, ऑक्सफोर्ड के जो IT के CSC कंप्यूटर साइंस के जो HOD है, उन लोगों के गाइडेंस में हम लोगों ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुरू किया, जिसमें ब्लॉकचेन की भी क्लासेस डॉक्टर हर्षवर्धन MIT से आकर के हिंदी में पढ़ाए। आइडिया ये नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, कोशिश करते रहना है। हम लोगों को अपना भी बिजनेस, अपना भी ग्रोथ स्टार्टअप का करना है, और साथ साथ ये वॉलंटरी प्लेटफॉर्म में भी हम लोग को टाइम कंट्रीब्यूट करना है। सर ये पूरा जो प्रोग्राम है 3 महीने का एक्सरसाइज होता है, सारे वॉलंटियर्स अलग अलग स्टेट से होते हैं, एंड जिन लोग भी जो भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट से मौजूद हैं, उन्होंने देखा होगा कि कैसे हम लोग उस स्टेट गवर्नमेंट को सर वहां के नोडल एजेंसी, हर स्टेट गवर्नमेंट का नोडल एजेंसी होता है जो स्टार्टअप्स को, महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी है, या केरला स्टार्टअप मिशन है, या स्टार्टअप पंजाब है, स्टार्टअप असम है, स्टार्टअप बिहार है, स्टार्टअप यूपी है, या नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग जो सेंटर्स बने हैं, वहां तक हम लोगों ने सर कनेक्ट किया लास्ट ईयर की तरफ, और इस साल और बहुत अच्छा हमें उसके आउटकम्स मिले। नए एंटरप्रेन्योर्स हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। जेएल के जगह से भी है, जम्मू कश्मीर से हमें 20+ वैसे नॉमिनेशंस मिले। भारत सरकार की जो FPO की स्कीम सब आई, FPO सर फॉर्मेशन हुआ,
बट एफपीओ के बाद हम लोगों ने देखा कि एफपीओ को अगेन स्केल अप कैसे करें। बड़े बड़े एफपीओ देश के किसी मेजर स्टेट्स में ही लिमिटेड थे, तो बाकी स्टेट्स में एफपीओ के लिए कैसे करें। तो हम लोगों ने वहां पे भी हम लोग एफपीओ के साथ, हमने नाबार्ड के साथ मिलकर के सब प्रोग्राम किया। आइडिया ये है कि अगेन एफपीओ को स्केल अप कैसे करें। तो बुनियादी चीजें हो गई, हो रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बट हम लोग सर ये मानते हैं कि हमें उसको स्केल अप कैसे करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल, माइक्रो लेवल पे जाके कैसे करें। मैं फिर से आप हमारे बीच इनॉग्रेशन सेशन में आए श्री अमिताभ वर्मा सर, मनोज कुमार सिंह सर, प्रताप सोमवंशी सर और श्री अशोक कुमार, अरुण कुमार शर्मा सर, जो कि हमेशा हम लोगों को मेंटरशिप और गाइडेंस मिलता है, हम लोग का फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगा सर। और ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने हम लोगों को समय दिया यहाँ पे आने के लिए, हम लोग को गाइड आगे करेंगे। और इसके बाद देयर विल बी 2 बिजनेस सेशंस जिसमें अलग अलग स्पीकर्स हैं एंड अलग अलग इंटरनेशनल कुछ बॉडीज के भी स्पीकर्स हैं। और इसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम भी हम लोग ऐसा रखते हैं सर कि जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें नेटवर्किंग बिजनेसेस का हो सके, दैट इज द मेन आइडिया। अवार्ड्स ये नहीं है कि दिस इज 1 डे अवार्ड, हम लोग हमेशा बोलते भी आए कि इसके बाद 1 ईयर तक हम लोग क्या बिजनेस सपोर्ट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके साथ मिलके, वेदर इज थ्रू पार्टनरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, न्यू मार्केट इंटरवेंशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये पूरा एक फुल डे हम लोग आपके साथ मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। इस प्रोग्राम में पार्टनर बनने वाले सारे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको सपोर्ट करने वाले, उन सबका वेलकम है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टार्टअप इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के नीति स्टार्टअप हब एंड नीति आयोग AIM। थैंक यू सो मच एंड वी एक्सपेक्ट कि एक जोश भरा, एक एनर्जी भरा और एक भारत और उद्यमी भारत का जो हमने पंचलाइन दिया इस बार, उसको बनाने के लिए आप लोग हम लोग का सहयोग देंगे और इसको पूरे हॉल को तालियों से, एक एनर्जी से हम लोग इसको बहुत पॉजिटिव एक वाइब सबके लिए देंगे। थैंक यू सो मच। We welcome Mr. Pratap Somvanshi sir to kindly join us today. Thank you sir for your kind words. Now, with great respect and immense pleasure, I would like to invite our guest of honor, Mr. Vikash Preetham, to kindly come on stage and grace the occasion with their presence. होंगे और भारत को उद्योग धंधों के विकास के क्षेत्र में आप सबका योगदान अहम है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं मुख्य अतिथि सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, एक्स चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है। श्री अरुण शर्मा जी हैं, एसडीजीपी गुजरात हैं। अमिताभ वर्मा जी हैं, बहुत जाने माने ब्यूरोक्रेट रहे हैं देश के, एक्स बैंकिंग सेक्रेटरी हैं। और अभिषेक कुमार जी हैं, जो भारतीय उद्यमी संघ के प्रेसिडेंट हैं। इस तरह के कार्यक्रम करने का इनका एक पुराना परंपरा रहा है। पिछले कई वर्षों से कई बड़े बड़े कार्यक्रम इस तरह के इन्होंने किए हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इनको भी बधाई देता हूं एक और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे,
भारत प्राचीन काल से ही उद्योग धंधों आयात निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश रहा है। एक समय हमारी जीडीपी विश्व की 25% होती थी, जो कि ब्रिटिश शासन के बाद गिरते गिरते केवल 4% पर आ गई है आजादी के पहले। इसके विपरीत ब्रिटेन का जो जीडीपी का हिस्सा था विश्व में वो 3% था केवल, और भारत पे कब्जा करने के 200 वर्षों के बाद उनका ये 3% बढ़ के 1870 में 25% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो समृद्धि थी वो कहां से कहां चली गई। हम जितने समृद्ध होते थे उद्योग धंधों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कोई हमारी आज की ये विश्वसनीयता या कार्य क्षमता नहीं है, ये बहुत पुरानी थी। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल में मैकाले ने क्लर्क बनाने की मशीन बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था भी लाई। लोगों का झुकाव उद्योग धंधों से हटकर एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाने पर हो गया। मैं झारखंड से आता हूँ। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हम पाते हैं कि लोगों का सपना होता है, पीढ़ियां बीत जाती है कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी किसी तरह पा लें। उद्योग धंधा, शेयर बाजार, व्यापार, इन सब चीजों के प्रति लोगों का रुझाव होता ही नहीं है। आजादी के बाद एक नया रुझान आ गया कि राजनेता बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है या सरकारी नौकरी करनी है। बिजनेस करता है तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही बेकार से काम कर रहा है, कुछ नहीं कर पाया है तो व्यापार कर रहा है, ऐसा भी सोचते थे लोग। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र देश का जो वेस्टर्न हिस्सा है, उन्होंने इस चीज को ज्यादा पहले पकड़ा कि हमें उद्योग धंधों का विकास करना है, औद्योगिक व्यवस्था कायम करनी है। शेयर बाजार भी देश का सबसे पहले गुजरात में ही पनपा और वहां से बाकी क्षेत्रों में फैला है। लेकिन 2014 के बाद मैं कहूंगा इस क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट इसलिए कहूंगा कि मोदी जी की सरकार आई, बहुत सारे कार्यक्रम नए आए, स्किल इंडिया आया, स्किल इंडिया के नाम से एक मिनिस्ट्री बनी, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बना, मुद्रा लोन शुरू हुआ, व्यापार को बढ़ाने के बहुत सारे साधन, बहुत सारे तरीके आए। सरकार ने औद्योगिक नवाचार को बदला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग बहुत ऊपर आई, जो हम बहुत पीछे थे, नीचे आए। विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था का स्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब भी बहुत कम समय में हुआ है, केवल 10 वर्षों के अंतराल में हुआ है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो स्टार्टअप इंडिया में केवल 400 कंपनियां थी। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा कंपनियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में हमारे यहाँ ज्यादातर लो एंड काम होता है, डिलीवरी वाले काम कर रहे हैं या बहुत हल्के फुल्के काम कर रहे हैं। कोई हम हैवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में स्टार्टअप ज्यादा नहीं बना पाए हैं। लेकिन वैसे सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा ओला कंपनी थी, मोबाइल ऐप एग्रीगेटर थी शुरू में, लेकिन बाद में प्रोग्रेस करते करते वो आज क्या कर रही है, आज वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, स्कूटी भी बना रही है। तो एक शुरुआत होती है, जब कोई भी शुरुआत होती है तो इसी तरह से होती है और धीरे धीरे वो शुरुआत ग्रेजुएट होती है और ग्रेजुएट होने के बाद हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और हमारा वो एक सफल वेंचर होता है। मोबाइल के क्षेत्र का मैं बात बताऊंगा। आज भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। 20 बिलियन डॉलर्स का हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया है। इस तरह से जिस दिशा में, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। वोकल फॉर लोकल हम लोगों ने जोर दिया था, उसके बाद हम लोकल फॉर ग्लोबल पे आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लोकल कंपनियां हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर हैं, लोकल जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो विश्व में अपना स्थान बनाए और विश्व में जाके अपना परचम फहराए और झंडा गाड़े। इस दिशा में अभी एक सप्ताह पहले जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स भी आए हैं। जीएसटी की दरों में भारी कमी हुई है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। पहले 4 स्लैब था, अब घट के 2 स्लैब हो गया है। जहां 35%, 30% के टैक्स स्लैब तो उनको घटा के 18% कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर हमें 20 और 25% का टैक्स देना पड़ रहा था, वैसे बहुत सारे वस्तुओं पे हमारा टैक्स स्लैब घट के अब 5% हो गया है।
तो इस तरह से हमने बहुत सारे वस्तुओं को कर मुक्त भी कर दिया गया है। इससे भी विकास की गति बहुत तेज होगी देश में, औद्योगिक विकास आएगा, उद्यमियों को कार्य करने का एक बहुत अच्छा अवसर और मौका हमारे देश में आने वाले समय में मिलने वाला है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। आप लोग उद्यमी हैं, अपना व्यापार करते हैं और सरकार आपके साथ सहयोग कर रही है और आपको सभी आवश्यक चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बाकी सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत अच्छा भविष्य देखता हूं, आप लोगों को बहुत उत्तम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा अपने क्षेत्र में आप लोग झंडा गाड़े, देश भर में आपके नाम की ख्याति हो और विदेशों में भी आप लोग भारत का परचम लहराएं। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your knowledge. Before we proceed, may I please request Mr. Nitish Kumar to welcome Mr. Prakash Somvanshi, Managing Editor, Hindustan Hindi Daily, to grace his presence with a stroll. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. Amitabh Verma to kindly grace the stage and deliver the address. नमस्ते। सीन माननीय मंत्री महोदय श्री सिरसा साहब, हमारे सहयोगीगण और भारतवर्ष के नए उद्यमीगण, ये हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। मैं आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। कुछ वर्षों से मैं लगातार आता रहा हूँ और इस सम्मेलन को देखते रहा हूँ। भारत एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का प्रयास क्या रहा है और कहां से कहां तक ये इस दौड़ में आगे आए हैं और आप सबको मदद कर पाए हैं। हर वर्ष मैं कुछ नए चेहरों को देखता हूं और कुछ पुराने चेहरे भी जरूर सम्मिलित रहते हैं, परंतु मेरी यही इच्छा रहती है कि स्टार्टअप की जो संज्ञा दी गई है या जो नामकरण स्टार्टअप किया गया है, उससे कुछ लोग उभर करके अब मेन स्ट्रीम में आए और स्टार्टअप कहलाने से अब अलग हटे। मैंने एग्जिट पॉलिसी भी अब हम लोग को बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो अधिकांशतः यह मैं देख रहा हूं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं भारत में वैसे ही कम हैं। अगर आप यूएसए देखेंगे तो करीब 4000 वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। फंड रेजिंग उतनी समस्या नहीं है। भारतवर्ष में 25-30 मीनिंगफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको पूरे जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं। इनिशियली जब आप स्टार्टअप होते हैं और कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है तो छोटी पूंजी तो बहुत लोग लगा सकते हैं। हम लोग भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बट कुछ पूंजी हम लोग भी कोशिश करते हैं तो स्टार्टअप लगाएं, लेकिन वह क्षमता नहीं है कि किसी स्टार्टअप को पूरे जर्नी में हम सपोर्ट कर सकें और आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। और जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो पुरानी स्टार्टअप हो गए, जो 10 साल 7 साल से मार्केट में अभी है उपलब्ध, जिन्होंने मार्केट का ट्रस्ट गेन कर लिया है, उन लोगों को भी हम स्टार्टअप की संज्ञा देते रह जाते हैं तो मेजर वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग को वही कॉर्नर कर ले रहे हैं और यह एक मूल समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि कुछ लोग ओवरसेल कर रहे हैं अपने आप को, तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और मुख्यतः ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। मैं तो एक सलाह पहले दूंगा, प्लीज डू नॉट ओवर सेल योरसेल्फ। मार्केट में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है और भारत में ये ट्रस्ट कायम करने में आपको 7-8 वर्षों का समय लगता है। लंबी जर्नी है। आप लोगों ने बहुत मशक्कत करके, बहुत हिम्मत करके यह रिस्क लिया है। जैसे कहा प्रीतम जी ने कि मुख्यतः कल्चरल प्रॉब्लम है इस
हम देश में तो नहीं कहें, लेकिन परिवर्तन हो रहा है, यानी इट टेक सम मोर टाइम। मुझे याद है करीब 15-17 साल पहले आप जैसे कुछ नौजवान लोग थे या लड़कियां थी जो आगे आ रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे बिजनेस में, लेकिन हमारे कार्यालय आए नहीं, भारत में था उस समय, और कह रहे थे कि पिताजी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी। मैंने कहा क्यों? बहुत बात करते करते हुआ कि शादी का कोई प्रपोजल ही नहीं आ रहा है, तो समझता है कि ये क्या करता है, कोई कंपनी चलाता है, तो ये देख, और इसलिए शादी कर लो। उन्होंने कहा कि शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर अपना बिजनेस कर देंगे। तो कल्चरल प्रॉब्लम है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। तो प्रॉब्लम है टू एक्सप्लेन टू पीपल क्या क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या करता है, साहब एक तो स्टार्टअप है। ये शब्द भी हो गया, जैसे पहले 25-30 साल या 40 साल पहले था, जो हम लोग एग्जाम दे रहे थे 1981 इसमें, तो था कि क्या कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा था, तो बहुत बड़ी बात करता है। आज क्यों वही है, आज लोग वही नहीं कहते हैं, ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप कर रहा है। तो एक कल्चरल प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, लोगों को ट्रस्ट की दिक्कत है और विश्वास नहीं हो पा रहा है, और नहीं होने का कारण भी है। जैसे कहा कि 1.5 लाख आज रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं देश में, लेकिन कॉस्ट फेलियर्स भी बहुत है, कॉस्ट ऑफ फेलिंग बहुत बड़ा है। कॉस्ट ऑफ फेलिंग वो भी आपको स्वीकार करना है। या अगर आप आए हैं कि मैं आज स्टार्टअप किया और मैं कल एकदम चल जाऊंगा और बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में। किसी ने भी किया शुरू में, अगर आप देख लें जो भी है। आज हम लोग को तो बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ओला और उबर और जोमेटो, इसको तो हम तो स्टार्टअप बोलना है, खैर स्टार्टअप अब है नहीं, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो गए हैं, तो उनकी स्थिति अब अलग हो गई है। बट अल्टीमेटली वही गोल्स लोगों का है। तो मैं यही कहूँगा अभी कि आप अपने आप को स्थिर रखें, और इस प्रकार का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात अभिषेक ने भी की, एक दूसरे से संपर्क करना है। आपस में इतना रिसोर्स टैलेंट अवेलेबल है, शायद बाहर देखने की बहुत हमको आवश्यकता न हो। फिर सरकार की ओर से भी बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, उनका भी आपको उपयोग करना चाहिए। वह भी मैं चाहूँगा कि आप उन सबको भी करीब से देखें। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कठिन है अवश्य, GST में कुछ इजी किया गया है फॉर्मेट को, और आवश्यकता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट जर्नी, इट इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन एज येट। मैं समझता हूँ बहुत लोगों के मन में होगी कुछ और किया जा सकता था, तो हमेशा होगा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आकांक्षाएं में अपेक्षाएं तो बहुत रहेंगी, और सरकार उस दिशा में आगे आपको और मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। एक और अच्छी चीज है कि मैं यह भी पा रहा हूँ कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज में से भी लोग उभर के आ रहे हैं। पहले ये केंद्रित था कुछ मुख्य मेट्रोज में कि बैंगलोर, हैदराबाद यहीं पर कार्य हो रहे हैं। अब मैं छोटे छोटे शहरों में देख रहा हूँ, और वहाँ के जो बच्चे भी इनोवेटिव हैं, छोटे छोटे घर से हैं, वहाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट है, प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू कैन प्रोवाइड। और है अब तो वह जमाना में समझता हूँ कि अब फिनटेक और एडटेक और हेल्थ टेक में अपार लोग आ गए। स्टिल मार्केट अभी बड़ी है, लेकिन अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब नए एरियाज हैं, डिजिटल भी नए एरिया है। इन एरियाज को आप ढूंढे, इस प्रकार के सम्मेलन में जुड़े। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सब मजबूत हों, और जैसे कहा कि मेन स्ट्रीम हो, और स्पेस छोड़ते भी रहे। ये चाहूँगा कि सब जल्दी जल्दी आप स्पेस छोड़े। मैं अभिषेक को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार कितने अच्छे लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपस में नेटवर्किंग मजबूत होता है, लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे और आगे बढ़ना है, जो और मजबूती से बढ़े। मेरी शुभकामनाएं हैं, और इस अवसर के लिए मैं सभी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you, sir, for sharing your insights. And now comes a truly special moment. The state-wise awards to entrepreneurs nominated from all across India. Today, we honor those who stood out, not just as business leaders, but as change makers, innovators, and architects of Bharat's future. May I please request Mrs. Madra Singh to take over the state-wise ceremony? A very good morning to all of you. To go ahead with the award ceremony,
we first need to understand who are these awardees. These are the ones who have brought about a social and community change, innovative change, and some women entrepreneurs who are leading their respective states from all across the country. We have awards in 4 categories this year: Bharat Incubator Award, National Entrepreneur Award, Social Changemaker Award, and Bharat Entrepreneur Award. The first category in which we will go ahead is the Bharat Incubator Award. I would request VFSTR TVI Council from Andhra Pradesh to first come up on the stage in this category. I would request all the awardees and the incubators to come up on the stage in the sequence I take your name in, to make things quick. The second in the list would be NIT Raipur Foundation for Innovation and Entrepreneurship from Chhattisgarh. I would request our Honorable Chief Guest and our esteemed guest on the dais to present the award to the awardees. The third in the category would be Pusa Success Society from New Delhi. CSIR IIM Technology Business Incubator from Jammu and Kashmir. Foundation for Technology and Business Incubation, NIT Rourkela, Odisha. Bundelkhand Innovation and Incubation Center Foundation from Uttar Pradesh. Atal Incubation Center, BIMTech, Uttar Pradesh. The last in the category would be UPS Council for Innovation and Entrepreneurship, better known as Runway Incubator from Uttarakhand. I would request all the incubators and the awardees to come up in the sequence that I announce your name in. NIT Raipur Foundation for Innovation and Entrepreneurship, Pusa Success Society from New Delhi, CSIR IIM Technology Business Incubator Jammu Kashmir, Foundation for Technology and Business Incubation, NIT Rourkela, Odisha, Bundelkhand Innovation and Incubation Center Foundation, Uttar Pradesh, Atal Incubation Center, BIMTech, Uttar Pradesh, awardees who have climbed down, I would request you to stay beside the stage for a group photograph. Please do not go out. Please. I would request the awardees who have already gone down and taken their award, please come up on the stage and stay so that we can just have a group photograph. I would request all the incubators who have taken the award to please come up on the stage and stay here for a group photograph. Would request all of you to join in for a group photograph.
Thank you very much. The next category in which we give away the awards are National Entrepreneur Award. We have 3 awardees from all across the country in this category. The first to come up on the stage would be Mr. Saurav Rana from Rawmart Material Solutions Private Limited from Maharashtra. Second would be Mr. K.S. Palani Kumar from Lakshmi Fibers, Tamil Nadu. And the last would be Mr. Amrendra Kumar Singh from Avita Laboratories Private Limited, Bihar. Now I request all the awardees to stay back on the stage for a group photograph. Mr. K.S. Palani Kumar from Lakshmi Fibers, Tamil Nadu. And we have Mr. Amrendra Kumar Singh from Avita Laboratories Private Limited, Bihar. Request all the awardees to come together for a group photograph, please. Thank you once again. The third category in which we go ahead is the Social Changemaker Award. And we have 2 entrepreneurs from the entire country to give away the award in this category. The first would be Mr. Francisco Fernandez from Pele Water Sports from Goa. Please come up on the stage. He has brought about a great change in Goa in the fisherman community. His work ensured that traditional fishermen are not sidelined in the modern economy, rather they received renewed dignity and employment generating options under his leadership. The second in the category would be I would request Deepak Dahiya from Hidden Land Private Limited from Jharkhand to please come up on the stage. They have done some very impactful work in the field of education and learning sector. They have established multiple science and innovation centers across Jharkhand and Chhattisgarh, creating affordable and scalable innovative spaces that ignite curiosity, bridge the digital divide, and prepare the youth for 21st century. Would request both the awardees to come up together for a group photograph. And we now begin with the last category, which is the Bharat Entrepreneur Award. The first in the category would be Unicornis Innovation Private Limited from Andaman Nicobar Islands. The second would be WeChange Solution from Andhra Pradesh. I would request all the awardees to please line up as quick as possible so that we can give away the awards in the proper timeline. The first would be Unicornis Innovation Private Limited from Andaman Nicobar Islands. तालियों की गूंज. Thank you so much for understanding.
The second is We Change Solution Andhra Pradesh. We have next name as ENTEREPREURS Private Limited from Andhra Pradesh. KT Marketing Arunachal Pradesh. Bafa Bags India Private Limited Assam. Purvottar Gram Prabha Private Limited Assam. And I would request all the awardees to stay back on the stage for the group photograph at last. Please do not leave the stage. Unicornis Innovation Private Limited, We Change Solution Andhra Pradesh, ENTEREPREURS Private Limited Andhra Pradesh, KT Marketing Arunachal Pradesh, Bafa Bags India Private Limited Assam, Purvottar Gram Prabha Private Limited Assam, Number 1 Healthcare Bihar, Pavni Organic Farms Private Limited Bihar, Atmik Bharat Industries Private Limited Chhattisgarh, Rus Beauty Private Limited Chhattisgarh. Number 1 Healthcare from Bihar, Pavni Organic Farms Private Limited from Bihar, Atmik Bharat Industries Private Limited from Chhattisgarh, Rus Beauty Private Limited from Chhattisgarh, Bafa Bags India Private Limited, Bafa Bags India Private Limited, Purvottar Gram Prabha Private Limited Assam, Number 1 Healthcare Bihar, Pavni Organic Farms Private Limited Bihar, Atmik Bharat Industries Private Limited Chhattisgarh, Rus Beauty Private Limited Chhattisgarh, Ecosite Technologies Private Limited Delhi, Elevate Athlete and Creators Ecosystem Global Private Limited Delhi, Infinity 3D Private Limited Goa, BHT Forge Gujarat, Sarthak Biotech Private Limited Haryana, Bug Hunters Private Limited Haryana. I would repeat the sequence again. Atmik Bharat Industries Private Limited Chhattisgarh, Rus Beauty Private Limited Chhattisgarh, Ecosite Technologies Private Limited New Delhi, Elevate Athlete and Creators Ecosystem Global Private Limited New Delhi, Infinity 3D Private Limited Goa, BHT Forge Gujarat, Sarthak Biotech Private Limited Haryana, Bug Hunters Private Limited Haryana. Infinity 3D Private Limited Goa, BHT Forge Gujarat, Sarthak Biotech Private Limited Haryana, Bug Hunters Private Limited Haryana, the other organizations, please line up beside the stage. Green Tech Research and Development Private Limited Himachal Pradesh, Muditam Ayurveda Private Limited Himachal Pradesh, Great Sport India Private Limited Jammu and Kashmir, Anmol Shakti Farmer Producer Company Limited Jammu Kashmir, Last Mile Care Private Limited Jharkhand, Arvind Kalyani Infrastructure Private Limited Jharkhand, Tiny Prison Labs Private Limited Karnataka, Farm Agritech Private Limited Karnataka. Bug Hunters Private Limited Haryana, Green
Enterprise Research and Development Private Limited, Himachal Pradesh. Moditam Ayurveda Private Limited, Himachal Pradesh. Great Sport India Private Limited, Jammu and Kashmir. Great Sport India Private Limited. Anmol Shakti Farmer Producer Company Limited, Jammu and Kashmir. Great Sport India Private Limited, they are approved by International Cricket Council for making international level bats. We have them amongst us today. Anmol Shakti Farmer Producer Limited, Jammu Kashmir. Last Mile Care Private Limited, Jharkhand. Arvind Kalyani Infrastructure Private Limited, Jharkhand. Please come up on the stage in the sequence. I take your name. Otherwise, you have to exchange your awards when you go down. Last Mile Care Private Limited, Jharkhand. Arvind Kalyani Infrastructure Private Limited, Jharkhand. Arvind Kalyani Infrastructure Private Limited, Jharkhand. Tiny Prison Lab Private Limited, Karnataka. Farm Root Agritech Private Limited, Karnataka. Next to come up would be Women Associates from Kerala. Make Your Own Perfume, Kerala. Rataway Technologies Private Limited, Madhya Pradesh. Fitsco Global Private Limited, Madhya Pradesh. Women Associates, Kerala. Make Your Own Perfume, Kerala. Rataway Technologies Private Limited, Madhya Pradesh. Fitsco Global Private Limited, Madhya Pradesh. Women Associates, Kerala. Make Your Own Perfume, Kerala. Rataway Technologies Private Limited, Madhya Pradesh. Fitsco Global Private Limited, Madhya Pradesh. Filterex India Private Limited, Maharashtra. SB Sai Dumpling Khan Private Limited, Maharashtra. Braves Enterprise, Meghalaya. RNK Industry, Mizoram. Do we have Rataway Technologies Private Limited from Madhya Pradesh on stage? And Fitsco Global Private Limited from Madhya Pradesh? Thank you. The organization that needs to line up as quick as possible is Filterex India Private Limited, Maharashtra. SB Sai Dumpling Khan Private Limited, Maharashtra. Braves Enterprise, Meghalaya. RNK Industry, Mizoram. Publicon Digital Private Limited, Orissa. Croatia Technologies Private Limited, Orissa. Course Brown Private Limited, Punjab. Maruti Nandan Crop Health Private Limited, Punjab. Do we have Filterex India Private Limited from Maharashtra on the stage? SB Sai Dumpling Khan Private Limited from Maharashtra. Brave Heart Enterprise, Meghalaya. RNK Industry, Mizoram. Publicon Digital Private Limited, Orissa. Croatia Technologies Private Limited, Orissa.
Heart, Brave Enterprise Meghalaya, R&K Industry Mizoram, Capricorn Digital Private Limited Odisha, Croatia Technologies Private Limited Odisha, Course Crown Private Limited Punjab, Maruti Nandan Crop Health Private Limited Punjab, Gharana Stays LLP from Rajasthan, Test Aing Solutions Private Limited from Rajasthan, Wheel Bridge Private Limited from Sikkim, Mirar Innovation Technologies Private Limited from Tamil Nadu, Kimertech Private Limited Tamil Nadu, Spatial Trade Private Limited Telangana, Geonified Solutions Private Limited Telangana. Do we have Gharana Stays LLP from Rajasthan on the stage? Test Aing Solutions Private Limited Rajasthan, Wheel Bridge Private Limited Sikkim, Mirar Innovation Technologies Private Limited Tamil Nadu, Kimertech Private Limited Tamil Nadu, Spatial Trade Private Limited Telangana, Geonify Solution Private Limited Telangana. The next to line up beside the stage would be Impact Weaver Private Limited Tripura, DDH Innovations LLP Tripura, Secure Edge FinTech Private Limited from Uttar Pradesh. तालियों की गूंज सुनाई देती रहनी चाहिए। Maina Hemp Store Private Limited Uttarakhand, Geoma Solutions Private Limited Uttarakhand, Sundarban Chemicals Private Limited from West Bengal, and last but not the least, Kotai Electronics Private Limited from West Bengal. Please line up and come up on the stage in the sequence I have taken your name. So do we have Mirar Innovation Technologies Private Limited from Tamil Nadu on the stage? Kimertech Private Limited from Tamil Nadu. Spatial Trade Private Limited from Telangana. Geonify Solutions Private Limited from Telangana. Impact Weaver Private Limited from Tripura. DDH Innovations LLC from Tripura. Impact Weaver Private Limited Tripura, DDH Innovation LLP Tripura, Secure Edge FinTech Private Limited Uttar Pradesh, Maina Hemp Store Private Limited Uttarakhand, Geoma Solutions Private Limited Uttarakhand, Sundarban Chemical Private Limited West Bengal, and Kotai Electronics Private Limited West Bengal. We have amongst us 12 women entrepreneurs who are leading their state, working shoulder to shoulder and hand in hand with their male counterparts. We have 65 awardees all together in all the categories from all across the country who have come here today to please come up in the front of the stage to have a group photograph.
Please arrange yourself in a way that everyone photographed can easily come in one frame. I would request all the ladies to go up in the front. I would request all the ladies to go up in the front. Please arrange yourself in height order. I did not want to say this, but please arrange yourself in height order so that your photograph can easily come in one frame. Thank you, everyone. Thank you. Please settle down. I would request Archie to take over the stage once again. I request everyone to please settle down. Congratulations to all the winners and a massive thank you to our esteemed guests for providing the awards. Moving forth, I humbly request now our chief guest, Shri Sardar Manjinder Singh Sirsa, to deliver his address. We eagerly look forward to your enlightening words, sir. आज के विशेष भारत एंटरप्रेन्योर्स समिट के अंदर बहुत ही सम्मानित माननीय विकास प्रीतम जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, माननीय अमिताभ वर्मा जी, फॉर्मर बैंकिंग सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरुण कुमार जी, फॉर्मर डीजीपी गुजरात, मनोज कुमार जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, અને प्रताप जी, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, अभिषेक कुमार जी, प्रेसिडेंट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे स्टार्टअप्स और ऐसे इनोवेशन के साथ आप लोगों ने पूरे देश के अंदर जाकर ऐसे काम किए और आपको जो आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, ये सम्मान देना मेरे अपने आप के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव है। जब किसी को आप इस कदर देखते हैं जो जनरेशनली बिजनेस में है, उनका एक थॉट प्रोसेस अलग है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा और एक ऐसी उड़ान भरी जिससे न केवल वो नए इनोवेशन और नए बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योर्स लाने में कामयाब हुए, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की पूंजी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कि हमारे सबके लिए आज गर्व की बात है जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके कारण कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इसलिए मुझे आप सब पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही मान है, बहुत ही हम सब एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां मेरे से पहले जैसे कहा गया, वर्मा जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा, नौकरी को एक बहुत बड़ी तवज्जो दी जाती थी, उसको अहमियत दी जाती थी। वर्मा जी, आपने अमिताभ जी जो विषय रखा, उसका मैं उसी में से निकल के आया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने ग्रेजुएशन में पास कर रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे विशेष तौर पर चंडीगढ़ बुलाया। मैं हरियाणा स्टेट का रहने वालों से का, और उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब में
पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, आप यहाँ पे नौकरी के लिए आए। तो मैं चंडीगढ़ से उनसे जब मिला तो वहां से मैं वापस आ गया। मैंने उनको कहा कि मैं नौकरी में नहीं जाना चाहता, मैं कारोबार में जाना चाहता हूँ। तब तो इतने साधन भी नहीं थे, आज तो भारत सरकार या स्टेट्स गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि इस तरह से जिस तरह भारत की सरकार ने और स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने बहुत बड़ा स्टार्टअप्स के अंदर नए उद्यमी के लिए ऐसे द्वार खोले हैं जिसके चलते आज हमें काम करने में काफी हद तक सहूलियत मिलती है। ऐसा नहीं है कि 100% सहूलियत है, बहुत सारे ईज डूइंग बिजनेस अभी बाकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जब हम खुद ही सरकार के अंदर हैं, देखते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि आप कारोबारी एंटरप्रेन्योर्स बड़े हिम्मती हैं, बड़ी आप में काबिलियत है कि सरकार के कई ऐसे बंधन हैं जो आपको काम करने को रोकते हैं और आपकी अपनी इतनी ताकत है कि आप उन बंधनों को तोड़कर भी कामयाब होते हैं। इसलिए सरकार के अंदर पिछले कई सालों से बहुत रेड टेपिज्म को खत्म किया गया। मैं वर्मा जी आपको बताना चाहता हूँ, जी मनोज जी, दिल्ली के अंदर मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ और बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी, अब एमसीडी का कोई लाइसेंसिंग से मतलब नहीं है इंडस्ट्री चलाने के लिए, लेकिन 1952 में कानून बन गया था तो कानून बन गया और बोलते हैं कि कानून वापस कौन ले। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मीटिंग की, भाई बताइए दिल्ली के इंडस्ट्रीज परेशान होते हैं, एमसीडी को ये खुद ही नहीं पता कि उसने किस चीज का लाइसेंस देना है और वहां लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है, वो सिर्फ इसी का क्या काम है आप जानते हो, मन से कहता मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता कि उसने लाइसेंस किस चीज का देना है। और एमसीडी कमिश्नर साहब से पूछते हैं कि आप किस चीज का लाइसेंस देना चाहते हैं, हमें ही समझा दीजिए एक बार, हम भी इंडस्ट्री मिनिस्टर है। बोले बस इतना ही बता सकते हैं क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। तो हमने कहा इसको हटाइए, बोले इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट तक जाइए। अब सोचिए कि जब हम ही लोग इतनी मुसीबत में हैं तो इंडस्ट्री कितनी मुसीबत में होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका रास्ता निकालने के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फैसला दिया कि ठीक है ना एक्ट बदलेगा ना बदलवाने जाएंगे, लंबे कामों में पड़ जाएगा। अब एक काम करिए, इस कमरे में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास मीटिंग थी, क्या इसमें तो सब लोग ईमानदारी से बैठे हैं ना कि गलत है, मानते हैं ना, बोले मानते हैं गलत है। तो फिर इसका साधारण रास्ता है कि आप अपना कानून को अपने पास रखिए, जो भी इंडस्ट्रिस्ट है, जो भी नया कारोबार करना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, आपका कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक ऑनलाइन अप्लाई मींस डीम्ड परमिशन, आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है। हमने 24 घंटे के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब दिल्ली के अंदर कोई भी बिजनेस करना चाहता है उसको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने रेस्टोरेंट खोलना है, अपने क्लब खोलना है, अपने होटल खोलना है, तो दिल्ली पुलिस का पोर्टल है। बताइए, दिल्ली पुलिस भारत सरकार कंट्रोल करती है, रेस्टोरेंट वाला चांदनी चौक में रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, बताइए क्या मतलब है उसका देश के होम सेक्रेटरी से? उसको क्या पता, देश का होम सेक्रेटरी को भी क्या पता कि चांदनी चौक में कोई होटल क्यों खोलना चाहता है? अब लेके बैठे हैं तो बैठे। अब जब हमने फैसला लिया कि बिल्कुल नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने तुरंत कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसका क्या मतलब हमसे दिल्ली का काम है, दिल्ली के लोग करें। तो मैंने देखा अगले दिन अखबार में एक आर्टिकल छप गया, आर्टिकल छपा कि जी एक सीनियर पुलिस अफसर कह रहे हैं इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन माहौल बनाना था, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें कानून को लागू करने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मैंने अखबार पढ़ने के बाद एक बार सोचा, यार यहाँ तो अखबार अकेली दिल्ली में आती है, या अफसर दिल्ली में अकेले रहते हैं, बाकी देश में भी तो है, क्या दिल्ली के लिए? इसलिए ऐसी इतनी सारी मल्टी जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें से इंसान निकलता हाँफता जब बिजनेस में कामयाब हो जाता तो उसको सल्यूट करने को दिल करता, भैया तू बहुत बड़ा। इतने बंधन तोड़ के कई जनरेशन तो बंधन अब देखिए दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री फ्री होल्ड नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम तो कई रोज देखते हैं कि भाई माफ करना मनोज जी, अफसर तो आप ही लोग के आपने बनाया होगा, और हम तो आपको देखते हैं कि अगर हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो ये बेचारे एंटरप्रेन्योर दब के खत्म हो जाएंगे। देश की इकोनॉमी आगे क्यों नहीं बढ़ती? लोग पूछते हैं हमारे कारोबार, हमारी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ती? अरे हम बढ़ने कहां देते हैं, हम तो पूरा इस बात की चिंता करते हैं। ये तो हिम्मत है देश के लोगों की, वो बढ़ा देते हैं।
वरना हम तो रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बताइए 3 जनरेशनों से फ्री होल्ड क्यों वाले प्लॉट। अच्छा मैंने पूछा भैया क्यों नहीं करते फ्री होल्ड, बोले जी देखिए ये लीज होल्ड प्लॉट है, अगर हम इनको फ्री होल्ड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी, बोले जी क्योंकि ये दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी, इनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट दिल्ली से बाहर निकालने, मतलब इधर दिल्ली से आउटर दिल्ली में निकालने के लिए प्लॉट दिए गए थे तब, इसलिए सस्ते दिए गए। बताइए अरे तुमने सस्ते दिए महंगे दिए, उसने पैसे देके प्लॉट लिया। मैंने कहा आप तो सस्ते महंगे की बात करते हो, मेरा बेटा अगर मेरे से पूछे कि DSIDC वाले फ्री में प्लॉट दे रहे हैं, मैंने कहा बेटा ये पाप मत करियो, फ्री में मत लियो इनसे, इनका तो फ्री का भी महंगा है क्योंकि तू फैक्ट्री लगा देगा और ये सारी मुर्गे मालिक बन के बैठ जाएंगे। तो बताइए क्यों नहीं करना फ्री होल्ड। अच्छा अब करते 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 तो पहुंचना शुरू हुआ, एक प्लॉट एक इंडस्ट्री एरिया पकड़ा, 2 करते 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 ऐसे 24 से 25 इंडस्ट्री एरिया निकल के आगे जो हो ही नहीं सकते। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकते, ये इसलिए नहीं हो सकते, बीडीए कहती है कि ये जमीन हमारी है, हम फ्री होल्ड करेंगे। हमने कहा चलिए आप ही फ्री होल्ड कर दीजिए। कह रहे जी फ्री होल्ड वाले सामने नहीं आ रहे, 2 लोग अभी बाकी हैं, तो आप इसको मेंटेन करिए। बीडीए बोलती मेंटेन करना हमारा काम नहीं है, तो फिर कौन करेगा, एमसीडी। एमसीडी वाले कहे हम कर देते हैं, पैसे हम लेंगे, बोले नहीं पैसे हम लेंगे, हम तो पैसे छोड़ नहीं सकते, तो नजूल का पैसा हम कैसे छोड़ सकते हैं। अरे क्या पैसे छोड़ सकते तो मेंटेन कर दिए, मेंटेन तो हम कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने हमारे अधिकार ही नहीं मेंटेन कर दिए। मेंटेन हम कर नहीं सकते, अधिकार हम छोड़ नहीं सकते। 3 जनरेशन होती है, 3 जनरेशन जो दिल्ली सरकार के दफ्तर के बाहर आके खड़ी होती हैं। पहले दादा आता था, बेटा, आजकल उनके बच्चे आते हैं, हमारी इंडस्ट्री फ्री होल्ड कर दी। ये सबके बावजूद जब आप कामयाब होके आते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको सलूट करने को दिल करता है कि क्या बात है यार, जो कैलिबर आपने वो देश में किसी के पास, दुनिया में किसी के पास नहीं है जो भारतीयों के पास है। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है, दिल्ली के अंदर जब से हमें मौका मिला है, अनेकों 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 ऐसी प्रॉब्लम। मैं सुबह बैठता हूँ, मैं कारोबारी भी हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं इन भावनाओं को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना, मैं अभी मैंने मनोज जी से यही कहा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था हमारे तो भारत दिल्ली में भी हो, तो अभी इन्होंने जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए एक वन टाइम पॉलिसी लाके लोगों को बाहर निकाला। हम जब तक ऐसे फैसले लेने के लिए हम आत्मनिर्भर खुद नहीं होते अपने आप पे, ये डर जो है सरकार ने तुम्हें बिठाया है, इसी बात पे तुम्हें अफसर डराते रहते हैं कि ये हो जाएगा, अच्छा ये साइन करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा नहीं करोगे तो फिर ये हो जाएगा। भैया करना क्या ये तो बता दो। तो फिर उनका मकसद क्या कि करना हुआ है जो हम बताएंगे, बात करिए ना, मतलब ऐसा नहीं कि हम भी उसी का कर लेंगे, आपके लिए तो अलग से बात नहीं कह रहे। मेरा कहना मतलब ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहा। तो हमने बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश की है। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़, जब आप भी नोएडा जाते होंगे तो बड़े परेशान होते होंगे, और आप अगर चंडीगढ़ की तरफ, तो हमने उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम शुरू किया। आपको सुनकर यह आश्चर्य भी होगा कि हमने मात्र थोड़े से समय के अंदर अब तक उनकी 20 मीटर हाइट कम कर दी और 25% उसकी लैंड को रिकवर कर लिया है, और उसके अंदर हमने प्लांटेशन का काम शुरू किया है 2027 तक। एंड आते आते दिल्ली के कूड़े के पहाड़ जैसे डायनासोर लुप्त हो गए, ऐसे दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को लुप्त करने का हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ये संकल्प है, मोदी जी का विकसित दिल्ली के लिए, हम उसको पूरा करेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अभिषेक कुमार जी का खास तौर पर। अभिषेक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम ऐसे प्रोग्रामों में बहुत जाते हैं तो दिल्ली के लोग जिनको हम जानते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति कर रहे बहुत सालों से, तो लगभग सभी को ही जानते हैं चेहरों को। वही घूम घूम के सामने आ जाते हैं, एक फंक्शन में जाते हैं तभी वही होते हैं, अगले में जाते हैं तभी वही होते हैं, और सामने अवार्ड देने वाले को शर्म आ रही होती है, यार कल भी सिरसा जी से लेके आया। पर मुझे अच्छा लगा कि आप देश के उस कोने से लेके आए हैं, उन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं जो आंध्र प्रदेश में हैं, जो तेलंगाना में हैं, और मैं देख रहा था मेघालय से भी आपने उन देश के उन लोगों को ढूंढा है जिन लोगों के कारण इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके, और देश के अंदर एक नई क्रांति लेके आए हैं। मैं इसके लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार की बहुत ही अफसर रश्मि जी भी नीचे हैं, रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी ये बहना बहुत मेहनत करती दिल्ली के लिए रात दिन, तो आपको परमात्मा और ताकत दे। आप सब इसी तरह एक भारत के सुंदर गुलदस्ते में खुशबू देते हुए फूल की तरह इसी तरह सुंदरता बिखेरते रहें, खुशबू बिखेरते रहें,
ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और फिर से बाद में अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप और तरक्कियाँ माने और इतनी बड़ी तरक्कियाँ हों, इतने बड़े स्तर पर जाएं कि हमें आपके और आपके परिवार को, आपके पिताजी को जैसे आपके मान हो, आपके समाज को मान हो, हमें भी आपके बहुत सम्मान और मान हो। आप सबका बहुत बहुत Thank you, sir, for sharing your insight. We are deeply honored by the inspiring address delivered by our chief guest, which has enriched this occasion with great meaning. Once again, thank you, sir, for sharing your knowledge. I would now request Mr. Abhishek Kumar, President of the Entrepreneurs Association of India, to come forward and facilitate sir with a memento. Heartfelt thank you, sir, once again for taking out time and sharing your wisdom with us. Next, I would like to call Mr. Arun Kumar Sharma to share some valuable words with us. Distinguished guests on the dais, respected organizers, mentors, fellow leaders, and above all, the bright entrepreneurs of today and tomorrow. It's truly an honor to be amongst you for the last consecutive 2 years. Last year also I had attended this function, and then I have seen a lot of old faces also, and there are additions of large number of new faces this time too. So, it's truly honored for attending this, which is a platform that celebrates ideas, innovations, and the spirit of enterprise that is shaping India's future. Entrepreneurship, as we know, is not just about starting the businesses. It is about solving the problems and creating an opportunity, and also giving an opportunity to have a dream which otherwise people will think that it's very difficult to do the works and all those things. But you have a dream for daring to do the difficult things in life. In a country as vast as and diverse as this one, every corner holds unstopped potential. From the bustling cities to the smallest villages, India is brimming with ideas waiting to take the flight. So, India at the cusp of becoming one of the world's leading entrepreneurship hubs, and particularly we are seeing that in the last decade, since last decade, there has been kind of a humongous growth in the number of the startups, which has also been discussed by Abhishek. So, from the bustling cities to the smallest villages, everybody is now dreaming of doing something new with their own creations, with their own innovations and the ideas which they are dreaming with. We are seeing the large number of startups being done in the fields of healthcare, in the field of agriculture, renewable energy, and countless other sectors. What is most encouraging is that this movement is being powered not just by the big investors, but by the students, the first generation entrepreneurs, women, and individuals from, as has been told by earlier speakers, that even the tier 2 and tier 3 cities are also now basically aspiring for doing the startup activities and getting themselves involved in such activities. And they are refusing to let circumstances define their destiny. Rather, they are doing the, the very tedious hard work to come up with the situations which they are struggling for. So, in the nutshell, entrepreneurship is not without the challenges. The challenges which are being felt by the startup initiators
are of various natures, like they have the problem about the finance, they have the problem about the mentorship, and the markets are also one of the challenges for them, which they often stand in the way of the young innovators. I've seen various innovators who are very good with their technologies, who are very well developed as far as the groundwork is concerned, and everything is ready. But due to the lack of they are not able to project themselves in the market. So market tendencies are very different kind of things which they are not fully aware with. So they are struggling to how to market their technologies, how to market their goods and products and all those things. So these are really a very challenging events, and then this is where these events like this summit play a pivotal role. By bringing together the entrepreneurs, investors, policymakers and the thought leaders, we create an ecosystem where ideas can grow, partnerships can form, and solutions can be scaled up. So I would like also to emphasize one important aspect of entrepreneurship, that is the responsibility. And entrepreneurs, as entrepreneurs, you are not only building the businesses, but also shaping the societies. So these are the responsibilities which are also being associated with the startup doers. The true success is not measured only by the profits, but by the positive difference you make in the people's lives. Whether it is through sustainable practice or job creation or the inclusive growth. In all these aspects, you need kind of a different kind of approach with the full of responsibilities and doing certain things which full conviction and with the full values. So my message to the youth and the entrepreneurs are very simple. Like you have to be fearless in pursuing your ideas, but also be patient in building them. Be innovative, but never compromise on the values and the ethics. And be global in outlook, yet you have to be deeply rooted in your local strengths and the traditions. These are the things, fundamental things, which need to be kept in mind by all the stakeholders who are present today in this summit. And you know that India has always been a land of visionaries, be it in the ancient pioneers of science and mathematics, or the modern leaders of industry and technologies. So you are also the torch bearers of this legacy. So this also has to be kept in mind. Let us remember that every successful enterprise we see today, whether in India or abroad, once began as a single idea. Then it has been nurtured by the determination and the hard work. So you have to believe in yourself and remember that the journey of entrepreneurship is not a sprint, it is a marathon race. You have to be accordingly set your minds and then think in that direction. These are the important things which I thought that I should be sharing with this kind of enlightened audience over here. So in conclusion, I extend my heartfelt congratulations to the organizers of this summit for creating such a vibrant platform. I wish each of you the courage to innovate, the wisdom to adapt, and perseverance to succeed. Thank you, and I look forward to seeing the great contributions will emerge. We expect that the great contributions will be emerging from this gathering, and wish you all the best. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for your insights, sir. May I now please request our esteemed guest, Mr. Manoj Kumar Singh, to share his address. नमस्कार। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, भारत एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हुए सभी साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत अभिषेक जी को और ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देते हुए करूंगा कि उन्होंने मौका दिया आप सबके बीच आकर कुछ बातें कहने का और आपकी कुछ बातें सुनने का। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स को करना होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आप उसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और उसके थ्रू उसको आप सॉल्व करते हुए कुछ वैल्यू एडिशन करते हुए सोसाइटी के लिए यूजफुल सॉल्यूशन निकालें। ये बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर का काम होता है। ये इंटेलिजेंट होना, क्रिएटिव होना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है, लेकिन जो मैंडेटरी चीज है वो कंसिस्टेंसी है। आपको उस काम में सालों साल लगते हुए काम करते रहना होगा, तभी आप जाकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स बेसिकली हम लोग समझते हैं और जानते हैं, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। मैं इन तीनों के बारे में जो आज की स्थिति है एंटरप्रेन्योरशिप की या एंटरप्राइजेस की, उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा। वो इस बैकग्राउंड में है कि आपने सुना लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं और हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है। लेकिन जो वाकई ग्राउंड पे रियलिटी है, बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो एक सक्सेस की जो एक परिभाषा है उसके अधीन वो क्वालिफाई करते हैं। और उसकी वजह ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे नंबर 1 पर आज की तारीख में देश है वो अमेरिका है, फिर इजराइल है, फिर सिंगापुर है, फिर कनाडा है और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान की बात 5वें नंबर पर आती है। लेकिन जो अमेरिका नंबर 1 पर है उनके पास क्या है और क्या चीज होना चाहिए, वो इन्हीं 3-4 जो एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली इसको डिटरमिन करते हैं कि किसी भी कंट्री में क्या उसकी व्यवस्था रहेगी, किस तेजी से इकोसिस्टम उनको फैसिलिटेट कर सकता है बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो जरूरत होता है वो एक्सेस होता है फाइनेंस के लिए, जो कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में बहुत ही मैच्योर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बहुत इजी एक्सेस है फाइनेंसेस के लिए, और वो एक इंडिया का बहुत बड़ा आप कह दें लिमिटेशन है। और हम लोगों के यहाँ बैंकिंग से आपको फाइनेंस मिले या किसी और सेक्टर से फाइनेंस मिले, कोलैटरल फ्री फाइनेंस मिले, इन सब के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस मिले, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है और ये आवश्यक है अगर हम स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो एक इनोवेशन का हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से सोसाइटी में काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ लेना देना होना चाहिए या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और वेंचर्स होने चाहिए, उसमें भी बहुत कमी है। जिस तरह से हार्वर्ड MIT काम करते हैं उस तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं है और उस तरह का संपर्क भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं है। तीसरा एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि उस कंट्री में, उस सोसाइटी में लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की, वो अच्छी बात है, हर देश इसके लिए आज की तारीख में कोशिश कर रहा है। कुछ साल पहले तक ग्लोबलाइजेशन का दौर था, लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे वो एंटी ग्लोबलाइजेशन, सभी लोग अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने अपने बैरियर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सभी कंट्रीज इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने यहाँ के एंटरप्राइज को एक लेवल तक ले जाकर सस्टेन कर सके। बिहार से काफी लोग यहाँ पर हैं, प्राइज लेने भी आए, अभिषेक जी भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4% परिवार बिहार में ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है। पूरे देश में 50,000 से ज्यादा इनकम के 10% परिवार हैं, तो लगभग 30 करोड़ परिवार इस देश में है। अब इतने कम संख्या में अगर परचेजिंग पावर परिवारों के पास है तो वो क्या खरीद लेंगे और कितना खरीद लेंगे। इसीलिए खुद आप अपने एंटरप्राइज को सिर्फ अपने लेवल पे आगे बढ़ा कर ले जा सके, ये बहुत मुश्किल है। मैं प्राइमरी सेक्टर से शुरुआत करूंगा। देखिए आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी, हिंदुस्तान में तो लगभग 55 से 60% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन सिर्फ 15% इनका GDP में कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज भी दुनिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले इनपुट और एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस की मार्केटिंग की अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ये सेक्टर है और इसीलिए शायद हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा आप स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हो। दूसरा एक कारण यह है कि लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर में काफी इनएफिशिएंसी है।
प्रोड्यूसर का सामान जो 10 रुपए किलो बिकता है, कंज्यूमर उसके लिए 100 रुपए किलो पे करता है, तो लोगों को लगता है कि ये 10 से 100 में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें काफी इनएफिशिएंसी है और हम इसमें पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसमें कई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, देहात वगैरह के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन वो अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाए। जो ट्रेडर्स या होलसेलर रिटेलर्स के बीच जो बहुत ज्यादा पैसे का निकलता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का गैप, उसको वो बहुत कम अभी तक कर नहीं पाए। यानी कि ये फिर या तो हमें मानना होगा कि उस सिस्टम में इतनी इनएफिशिएंसी नहीं है जितना वो दिखता है, अच्छा खासा वैल्यू एडिशन है, या हम उस तरह की टेक्नोलॉजी पे अभी तक पहुंच नहीं पाए। यूपी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, एटेक्स के साथ किया था, और मैं देख रहा था यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन से युवराज यहाँ पे आए हुए थे, और लगभग हम लोगों ने 10 ऐसे स्टार्टअप्स को उसमें आइडेंटिफाई किया था और उनके प्रोजेक्ट्स को फंड किया था स्टेट की ओर से काम करने के लिए। यूपी में लगभग 2,63,00,000 किसान हैं, 8 करोड़ प्लॉट्स हैं, 3 सीजन में खेती होती है, कोई भी मैनुअल तरीका नहीं है कि किस एरिया में कितना क्रॉप लग रहा है इसको असेस करने के लिए, और ये साल दर साल कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसको कर सके। वो लेखपाल पटवारी करते हैं, लेकिन वो घर बैठे करते हैं। पहली बार रिमोट सेंसिंग को यूज करते हुए और क्या क्रॉप किस फील्ड में है, ये सभी 75 जिलों का एक असेसमेंट का 4 स्टार्टअप्स को लगाकर कराया गया। उसी तरह फिर प्रोसेसिंग में सोलर को यूज करते हुए कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, और मेज का कल्टीवेशन कैसे बढ़ाया जाए, इन सब 3-4 एनिमल हस्बेंड्री में एआई की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए। आज की तारीख में लगभग 30% एआई की इफेक्टिवनेस है, तो उसको कैसे ऊपर ले जाया जाए, इस तरह के स्टार्टअप्स को वहां पर फंड किया गया था। एग्रीकल्चर के बारे में कम लोग जानते होंगे कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में ट्रेडिंग की कंपनीज दुनिया में लगी हुई हैं, वो किसी भी नोन जो आईटी की कंपनीज हैं या माइनिंग की कंपनीज हैं उनसे ज्यादा बड़ी टर्नओवर की कंपनीज हैं, लेकिन लोग उनको जानते नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक फूड है, वो एक सेंसिटिव रहता है, पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो जो भी कंपनीज हैं वो बहुत लो की पे काम करती हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 कंपनीज हैं पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर के ट्रेड का 90% कंट्रोल करती है। कम लोग इसको जानते हैं, उनका नाम है ABCD। A is for Andes, B is for Ganges, C is for Kargil and D is Deferus। ये ABCD कंपनी है जो एग्रीकल्चर की 90% ट्रेड को पूरी दुनिया में कंट्रोल करती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वो कंपनीज होंगी, लेकिन वो काफी लो की रह के काम करते हैं, क्योंकि वो जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं, अगर कहीं कोई फूड को रिलेटेड रॉयल्टी इश्यूज होती हैं तो उनके लोग किडनैप हो जाते हैं। इसीलिए उनकी अपनी एक ग्रेन ट्रेड करके एक किताब है, मैं आपको एडवाइस करूंगा, उसको पढ़िए और देखिए कि कैसे दुनिया में ग्रेन का ट्रेड ऑपरेट होता है। बट एग्रीकल्चर में इसलिए आपके सामने लाया था कि आज भी इस सेक्टर में स्टार्टअप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसानों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर से ट्रांजिट करते हुए हर सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाती है और फिर सर्विसेज की ओर जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के और किसी भी देश के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। मैं आपको एक छोटे 2-3 आंकड़े बताना चाहूंगा, आपकी समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर का क्या रेलेवेंस है हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया में सिर्फ 10% जो लैंड है उसके ऊपर खेती होती है, बाकी खेती पे रेत है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, बर्फ है या जंगल है। ब्राजील का 2/3 हिस्से पे जंगल है। तो पूरे प्लैनेट का जो पृथ्वी है उसके 10% हिस्से पे खेती होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ये 45% हिस्से पे खेती होती है। मैं यूपी से आया हूँ, यूपी में लगभग 75% एरिया में खेती होती है। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट इरिगेशन का होता है। पूरी दुनिया में जो खेती होती है उसमें सिर्फ 21% खेती एश्योर्ड इरिगेशन के अंदर है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 55% का है और यूपी में ये 86% का आंकड़ा है। यानी जिस देश में 45% हिस्से पे खेती हो रही है, 55% एश्योर्ड इरिगेशन है, या जिस प्रदेश में 75% हिस्से पे खेती हो रही है और 86% इरिगेटेड है, इनके लिए एग्रीकल्चर की अहमियत वही नहीं हो सकती है जो पेरू की है या ऐसे देशों की है, ग्रीस की आप कह लें, जहाँ की ज्यादातर 80% हिस्सा पहाड़, पथरीला या इस तरह का। इसीलिए हमारे यहाँ हम भी वही सिस्टम फॉलो करें ट्रांजिशन का और उतनी ही स्मूथली एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लोग चले जाएं, ये आसान नहीं है।
और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसानों की जिस तरह की आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चर में काम करते हुए किसानों की आमदनी को और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ किसानों को पैदा किए हुए जो उपज है उनका क्या मूल्य मिलेगा, वो और अधिक पैदा करेंगे तो और भी कम मूल्य मिलेगा। ये एक नेचुरल कोरोलरी की बात हो सकती है। लेकिन जरूरत है इस बैकग्राउंड में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अपने से ज्यादा अमीर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करना है। और इसीलिए अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो नवंबर दिसंबर तक कमीशन होने वाला है, उसके पास एक लगभग 100 एकड़ जमीन में एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हब डेवलप करने की बात हो रही है। दुनिया के बहुत छोटे छोटे देश हैं जो कई सालों से कार्गो प्लेन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश होने के बाद भी आज भी एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होते हैं वो पैसेंजर प्लेन के बेली में ही होते हैं, यानी जो आपका बाकी पैसेंजर का कार्गो है उसके साथ ही वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आज तक हिंदुस्तान से कार्गो प्लेन में एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और इसकी व्यवस्था जेवर एयरपोर्ट पे बनाई जा रही है। अलग अलग देशों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अलग टेस्टिंग और अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर आम को आप अमेरिका में भेजना चाहते हैं तो गामा रेडिएशन करना होता है, उसके बगैर आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। अगर जापान में भेजना है तो हॉट वाटर वेपर ट्रीटमेंट करना होता है। पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सभी तरह के ट्रीटमेंट हो सके, सभी तरह की टेस्टिंग हो सके। ये फैसिलिटी जेवर में क्रिएट की जा रही है। और इसके बाद मेरा ये मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने से ज्यादा रिचर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था बनाते हैं तो किसानों की आमदनी और किसानों की स्थिति में बहुत ही अच्छा और बेहतर सुधार हो सकता है। इसीलिए स्टार्टअप्स के रूप में आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे फिर अपील करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है और अभी भी कई प्रॉब्लम्स हैं किसानों के और एग्रीकल्चर सेक्टर के, जिसको आप जैसे स्टार्टअप इस पे काम करें तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। आई कैन सी यहाँ पर मिस्टर आहूजा है, आप हाथ उठा दे रहे हैं एक बार। ही इज फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, आप लोग इनको संपर्क कर सकते हैं। दे एक्टिवली इंगेज विद दी स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसीलिए मैंने अभिषेक को रिक्वेस्ट किया था आपको बुलाने के लिए। ये आपकी काफी मदद कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों के पास काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। अब दूसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है। साथियों, इसे मानने में हम लोगों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग का जो बस था वो इंडिया मिस कर चुका है। जो लेवल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और जो कैपेबिलिटी क्वांटिटी वाइज चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग की, उस तरह के माहौल में इंडिया फिर से मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऐसा सेटअप क्रिएट कर ले और उस क्वालिटी का प्रोड्यूस बनाकर उनसे सस्ते में बेच दे, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया ये मैं आपको बताना चाहूंगा और इस संबंध में 2 किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको पढ़ना चाहिए। एक चिप वॉर है मॉरिस की और दूसरी अभी एक एप्पल इन चाइना है जो पैट्रिक मैकगी की। अभी आपने सुना, मुझे पहले पूर्ववक्ता बता रहे थे कि मोबाइल में हमने कितने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इन सब के पीछे आपको पता नहीं होगा कि कहानी क्या है। इन सब के पीछे कहानी ये है कि सैमसंग की एक जो फैक्ट्री है वो 2007 में नोएडा में लगी और आज की तारीख में पूरे देश में जो मोबाइल बनता है उसका 55% मोबाइल अकेले नोएडा में बनता है। मोबाइल के जो कंपोनेंट है उसका 60% कंपोनेंट अकेले नोएडा में बनता है। और एक कंपनी सैमसंग जैसी आई और उसके आगे और पीछे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में आज की तारीख में डिक्सन और न जाने कई ऐसी कंपनीज वहां पर खड़ी है जो कि ऑटो मोबाइल के कंपोनेंट्स को और मोबाइल को आज की तारीख में वहां पर बना रही है। यही स्थिति बनी थी चाइना में एप्पल के साथ। बट मोबाइल के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है चिप के ऊपर। और चिप वॉर की जो किताब मैंने आपको रेफर करी, इसमें इससे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और इंटीग्रेटेड दोनों एक साथ, डिसेंट्रलाइज्ड भी है और इंटीग्रेटेड भी है, ऐसी कोई इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है। चिप आप समझ सकते हैं कि उसका रेलेवेंस ऑटोमोबाइल से लेकर डिफेंस में कितना ज्यादा है। वियतनाम के साथ वॉर में अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि वियतनाम में एक ब्रिज है उसको तोड़ें और उसके ऊपर उन्होंने 200 मिसाइल मारी और एक भी मिसाइल ब्रिज के ऊपर नहीं गिरा क्योंकि उस समय ये सेमीकंडक्टर्स इस लेवल पे नहीं थे। आज की तारीख में आपने देखा कि यहाँ से आप 1
1 मीटर के भी टारगेट को आप 2000 किलोमीटर से आप उसको हिट कर सकते हैं। ये क्यों संभव हो पाया? ये चिप की वजह से संभव हो पाया, सेमीकंडक्टर की वजह से संभव हो पाया। सेमीकंडक्टर की शुरुआत टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से हुई थी, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा TSMC इसको बनाती है, जो ताइवान में है। इसको बनाने के लिए यूवी जो मशीन होती है वो नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML, पूरी दुनिया में वही बनाती है और कोई नहीं बनाता। और एक कंपनी $200 मिलियन की होती है। जो केमिकल्स यूज होते हैं वो जापान मैन्युफैक्चर करता है और कोई नहीं मैन्युफैक्चर करता है। यानी मशीन एक देश बना रहा है, केमिकल दूसरा देश बना रहा है और वेफर्स तीसरा देश बना रहा है। इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी बगैर अमेरिका के सहमति के ट्रांसफर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में अभी जो हम लोग कर रहे हैं 1 लाख करोड़ का जो बजट रखा गया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फैब्रिकेशन के लिए, ये तीसरा अटेम्प्ट है। 2 अटेम्प्ट पहले हो चुके हैं और अभी इंडिया में वो सक्सेस नहीं मिली। ये तीसरा अटेम्प्ट है जब हम लोग इसमें कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जितनी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, गुजरात में, आसाम में और यूपी नोएडा में भी हुआ है HCL और फॉक्सकॉन के साथ, उसमें 12 नैनोमीटर या उसके ऊपर के ही जो चिप्स हैं उसको बनाने के लिए अभी तक सहमति बनी है, जबकि देश दुनिया 3 से 4 नैनोमीटर की ओर जा रहा है। यानी ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल लीवरेज है जो अमेरिकन इसको कंट्रोल करता है। और उन्होंने उनके कहने से ASML कहाँ पे मशीन जानी है, ये सारी चीजें वो डिटरमिन करती हैं। तो इस तरह के सेटअप में आपको काम करना है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं एप्पल इन चाइना का देना चाह रहा था वो इस बैकग्राउंड में था कि जिस कदर इस तरह की कंपनीज को लाने के लिए कंट्रीज को काम करना चाहिए, उसमें हम लोगों का भी और बहुत आगे आकर काम करने की जरूरत है। एप्पल को लगभग 25 साल पहले चाइना में 300 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने न सिर्फ अलॉट करी बल्कि उसको डेवलप किया और आधी फैक्ट्री उन्होंने खुद बना कर दी। और वहां पर फॉक्सकॉन को ताइवान से शिफ्ट करने के लिए चाइना ने ये किया था। और पिछले 20 साल में हर साल लगभग $55 बिलियन एप्पल चाइना में इन्वेस्ट किया है। आपने एक सुना होगा चिप एक्ट, पिछली गवर्नमेंट ने अमेरिका का बनाया था कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को USA ले जा रहा है। उस पूरे एक्ट का जो टोटल बजट है वो $55 बिलियन का है ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स। जबकि एप्पल पिछले 20 सालों से हर साल $52 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है आज तक। आप इमेजिन कर लीजिए किस लेवल का इन्वेस्टमेंट है। अभी तक उन्होंने 3 करोड़ लोगों को इस इंडस्ट्री में ट्रेन किया है और 50 लाख लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है। और वो फॉक्सकॉन एक कंपनी की बता रहा हूँ और एक एप्पल। फॉक्सकॉन जो उनका मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का सबसे बड़ा IT मैन्युफैक्चरर है वो, और एप्पल जो सबसे बड़ी कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी जिसका टर्नओवर लगभग 3 ट्रिलियन है, USA के इंडिया के इकोनॉमी के बराबर है, उसने 3 करोड़ लोगों को ट्रेन किया, 50 लाख लोगों को एम्प्लॉय की हुई है। ये उनको ले गए, क्या दिया? 300 एकड़ जमीन फ्री दी और इनका थोड़ा इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया। हमारे यहाँ बहुत कम स्टेट्स या बहुत कम गवर्नमेंट्स इस तरह से आगे आती हैं कि किसी को फैसिलिटेट करें और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स बनाएं। लेकिन इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट जब आते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में एक इंटरनेशनल जो वैल्यू एडिशन की चेन है उसमें लोगों को कनेक्ट होने का, देश के लोगों को कनेक्ट होने का एक मौका मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पे काम करने के लिए। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत हाई है। गवर्नमेंट बहुत कंसर्टेड तरीके से उसको कम करने के लिए काम कर रही है, लेकिन मंत्री जी ने बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि कितनी प्रॉब्लम है। उन्होंने एक बताया कि उन्होंने एक किसी केस में डीम्ड अप्रूवल की बात कही या पॉलिसी बनाई। ये डीम्ड अप्रूवल कई सालों से कई स्टेट्स में है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी आदमी ये डीम्ड अप्रूवल की बदौलत 100 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाता। इसके लिए दूसरे तरह की हिम्मत चाहिए। वो बड़े बड़े लोग 1-2 लोग ही कर सकते हैं कि बगैर किसी अप्रूवल के आपने वहां पे 100 करोड़ लगा दिया। आम आदमी, आम एंटरप्रेन्योर या आम बिजनेसमैन डीम्ड अप्रूवल की बदौलत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो बेसिकली आपको अप्रूवल्स जल्दी मिले, क्लैरिटी के साथ मिले और तेजी से मिले और कम से कम अप्रूवल्स की जरूरत हो, ये अटेम्प्ट होना चाहिए रिफॉर्म्स का। और साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ये कहते हुए कि आज की तारीख में जितनी ज्यादा जरूरत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.
your words were indeed valuable. The guest awardees and audience is requested to kindly be seated and stay back. Consider being seated. Today, as EAI completes 12 glorious years, we look back at a journey that began with a dream in 2013. That is to make entrepreneurship accessible for every Indian, not just in metros, but in every gaon, kasbah or zilla. To conclude this inaugural session, we are now invite Ms. Subhadra Singh, Head of Programs for Women Development EAI, to deliver the vote of thanks. Thank you, Archie. A very good morning once again. But before I deliver my vote of thanks, it's a kind request to all the awardees to stay back in the hall. Please do not leave, because we have many more things and the networking session after the inauguration session, where you are required to stay back. So, and before I go ahead with the Thanksgiving, my vote of thanks speech, I would request Archie to take ahead to give away the mementos to our esteemed guests. Moving ahead with the distribution of mementos, now I kindly request our guest, Mr. Raja Kalam, to hand over the memento to Mr. Vikash Preetham as a token of love and respect. Thank you, sir. Next, I invite Mr. Jaykant to present the memento to Mr. Amitabh Verma. Now, I request Mr. Rajesh Kumar to hand over the memento to Mr. Arun Kumar Sharma. Next, I request Ms. Subhadra Singh to hand over the memento to Mr. Manoj Kumar Singh. Thank you, ma'am, and to all our guests. Next, I would like ma'am to take over. Well, very good morning to all our esteemed guests here on the dais. Shri Vikas Preetham ji, Shri Amitabh Verma ji, Shri Arun Kumar Sharma ji, Shri Manoj Kumar Singh ji, and Abhishek Kumar ji. And all the investors, supporting partners, state partners, and hall full of enthusiastic entrepreneurs right here. I take the opportunity on behalf of the organizing team at Entrepreneur Association of India to thank each one of you who are present in the hall to make this summit a powerful gathering of ideas and possibilities. To our honorable guests here on the dais and in the audience, your vision and constant support and encouraging words continue to pave the way for innovation and entrepreneurial spirit in us. To the investors and stakeholders, thank you for backing up bold ideas and believing in the future of Indian startups. To our state partners and supporting partners, your collaboration ensures that innovation does not stay confined to the metros itself, but reaches every corner of our nation, and together we reach the unreached. And last but not the least, to all the entrepreneurs and participants here in the hall from across the country,
You are the heartbeat of the summit. The energy, passion, and groundbreaking technologies showcased in your journey so far, especially in AI and next generation startups, prove that India is ready to lead the world in tech-driven solutions. Your work in the field, ranging from technology to sustainability, healthcare to education, agriculture to digital transformation, shows us that innovation is not just about invention, but it is about solving real problems and improving lives. This summit has been more than just an event. It is indeed more than an event. It has been and it is a celebration of ideas, resilience, and the boundless spirit of entrepreneurship. Our technological and innovative startups have not only showcased their brilliance, but also reaffirmed that future of India is being shaped right. This is not the end, but the beginning of stronger collaborations in future, smarter technologies, and bigger impact. Together, we are building not just businesses, but the future of India. Thank you once again for being part of a small family here at Entrepreneur Association of India. Thank you. Over to you, Archie. With that heartfelt vote of thanks, we are now proceeding towards the official conclusion of the inaugural session. But before we officially conclude the session, audience, I would now like to grab your attention to showcase and present to you a very interactive product called Go for Ad, which is a QR code that turns any print into a mixed reality. This is the same QR presented to you on the cover of the booklet. Can we please display the video on the screen? Like this. People, once upon a time, ads felt lifeless. Newspapers skipped. Billboard and audience just static, part of the background. But we are heading towards an augmented world, a world where immersive begins. With GFA QR, print is no longer just print. It's alive, interactive, and full of experiences. One simple scan can unlock product demos, transform campaigns into stories, deliver messages directly and effectively. Your brand steps off the page and into your audience's world. And it's simple. Sign up on GFA QR, upload your creative ad, campaign or product design. Publish your campaign on multiple print media channels like newspapers, billboards, magazines, flyers and standees. This is more than advertising. This is mixed reality. Now, we will proceed with the knowledge session 1, that is statewide examples from the entrepreneurial ecosystem. Can we please have Dr. Sashmit Padra, MP, Rajya Sabha Advocate, Supreme Court of India on stage. Next, I would like Mrs. Rashmi Singh, Secretary of Women and Child Development, Government of NCT of Delhi on stage. Moving on, we have Mr. Saurabh Shah, IPS, Executive Director of Power Finance Corporation on stage, please. Dr. Kamaljeet Anand, Faculty of IIMA, Managing Partner and Chief Data Scientist, Square Analytics, up on stage. C.A. Shashi Mohan, Director of EAI, please grace the stage with his presence. Repeating the names, we have Dr. Sashmit Patra, Mrs. Rashmi Singh, Mr. Saurabh Shah, and Dr. Kamaljeet Anand, along with C.A. Shashi Mohan on stage, please. In today's fast-changing world,
knowledge is the driving force behind innovation, entrepreneurship and sustainable development. India's growth story depends not only on its demographic strength, but also on how effectively we are able to harness knowledge, technology, and skills to create impactful solutions for the society. This session brings together an eminent panel of thoughtful leaders and practitioners who have been at the forefront of building knowledge systems that connect policy, technology, and innovation. Their insights will help us understand how India can strengthen its knowledge ecosystem to foster entrepreneurship, empower communities, and position itself as a global leader in innovation. We are privileged to have with us distinguished speakers, Mr. Prashant Kumar Thakur, IRS, Mr. Rohit Gupta, Rajesh Singh. I warmly invite all of the panelists that are on the stage to share their valuable perspectives and experiences with us. Now, I would like to invite the President of EAI to honor Dr. Sashmit Patra with a stroll, please. Next, we invite Mrs. Rashmi Singh, Secretary of Women and Child Development, to be honored with a stroll. Next, we have Mr. Saurabh Shah, Executive Director, Power and Finance Corporation. Next, can we please have Dr. Kamaljeet Anand? Next, we have C.A. Shashi Mohan. We welcome you all. Proceeding with the session, now I would like to invite Dr. Sashmit Patra to deliver his speech. On the dais, Mrs. Rashmi Singh, Secretary, Women and Child Development Government of NCT of Delhi, Mr. Pratap Sombanshi ji, Managing Editor, Hindustan Hindi Daily, Delhi, Mr. Saurabh Shah, IPS, Executive Director, Power Finance Corporation, Dr. Kamaljeet Anand ji, Faculty, IME, presently the Managing Partner and Chief Data Scientist at Chi-Square Analytics, distinguished members of the press and media, dignitaries, ladies and gentlemen. Firstly, I'd like to congratulate the EAI Entrepreneurs Association of India for having invited me for the 4th Bharat Entrepreneurship Summit, which is around the title India's first summit integrating the state-level entrepreneurial ecosystem.
I will have to leave a little early because I was supposed to be over by 12:20, so I had scheduled something around 12:45, and I'm very grateful that I have been given some time to start with. The theme that has been provided to us this morning for this session is state-wise examples from the entrepreneurial ecosystem and learnings from around the world. Now, entrepreneurship, since most of you here are entrepreneurs, and former Chief Secretary of UP, Mr. Singh, in his speech, he also talked about regulatory cholesterol and why regulatory cholesterol can be difficult for entrepreneurs. So then what are the states and how are these states working, and what is the kind of ecosystems that these states are doing that is changing or improving the entrepreneurial environment? I think about 8 to 10 minutes I have, and I'll try to wrap it up within that. Let's look at the first state. And I'm not starting with my home state, I'll start with the state of Telangana. It provides a collaborative incubator model. Why? There is an operative mechanism that the state started doing, which was using something called as a T-hub. T-hub was basically as an anchor, which was funded by the government, brought in government, corporates, academia, and startups into one platform. The state doesn't provide the policy. The policy is determined by the T-hub, which is a startup ecosystem. And the state provides infrastructure and the first initial funding in order to ensure that the T-hub performs. Now, why does it work? Why does this ecosystem work? It works because there is a nexus of connections that connects founders to venture capital, corporates, and global markets under one roof. If somebody is a startup there, the startup does not have to go door to door to find out about regulatory, it's under the same roof. If it wants venture capital, it doesn't have to move street to street, it finds it under the same roof. If it wants to find out about global markets and about intellectual property rights, it doesn't have to move door to door, it finds it under the same roof. When you provide an ecosystem, the organization or the startup improves. I'll come to the second one, and I'll try to complete as quickly as possible. Let's go by the Karnataka model. The talent, resource and development capital loop. So what does Karnataka thrive on? Bengaluru thrives because of a self-reinforcing loop where engineering talent is present, corporate research and development centers are present, venture capital money is present, startups are present, so it attracts more talent attraction. It's an ecosystem, it's not a city. We have to look at ecosystems rather than looking at cities and hubs. The state policy like Elevate 100 supports early stage startups, but the operative strength is the pipeline from universities to labs to startups. So what is the learning? The learning is that sustainable ecosystems are built when talent, capital, research and development reinforce each other in one loop. I come to the third state of Gujarat, the cluster industrial model. What does it mean? If you look at the operative mechanism, it is basically the industrial clusters that have been created, creating an ecosystem of textiles, chemicals, auto parts that provide in one ecosystem supplier networks, logistics, trust-based MSME linkages. What does it do? The startups can plug into the existing supply chain networks. They do not have to reinvent it. So it's a plug-and-play model by which startups can start performing quicker rather than trying to reinvent the wheel from day one. So the state's Vibrant Gujarat is not only a summit,
but a deal-making platform that links MSMEs with global buyers and investors. What is the learning? The learning is that ecosystems succeed when they reduce transaction costs for entrepreneurs through trust, networks, and continuity. I come to the third ecosystem, Kerala, the distributed and inclusive model. Now the Kerala Startup Mission runs a decentralized incubated network. I talked about Telangana. It has T-Hub. It is centralized. I talked about Karnataka, Bangalore, centralized. Kerala, every district, they have not centralized it. Every district has innovation hubs and students are encouraged to build the startups early. The ecosystem does not focus on unicorns. एक होड़ लगी हुई है. Everybody wants to be a unicorn. Everybody wants to be that $1 billion startup. Not necessarily you have to be a startup to be as successful as a unicorn. It's good to be a unicorn. But then someone can also be an MSME in the bottom of the pyramid and be successful. Not everyone is built to only become a unicorn. So what they do is they focus on social impact that the startups do. They work on women entrepreneurs and rural innovators, and the learning is that inclusion deepens the ecosystem, and by broadening the base, you increase the profitability of breakthrough startups. I come to the fifth one, the Rajasthan Youth Pipeline model. Through I Start Rajasthan, school and college students are onboarded early onto entrepreneurship, while mentoring and incubation is built into the education. How many of us read entrepreneurship till class 10? Entrepreneurship cannot be taught. Entrepreneurship cannot be trained. Entrepreneurship is a spirit that you imbibe in your heart and you walk every day knowing that you might fail today or you might succeed. You might rise or you might die. But that is what goes and builds an entrepreneur. The safety of the job is not the anchor. And that is why one looks at Rajasthan, and Jaipur has become a hub because the pipeline starts at the classroom level, not post-MBA or post-jobs. I come to Odisha, which is my home state. And the startup Odisha Yatra that takes incubation and mentoring to Tier 2 and Tier 3 cities is now engaging directly into colleges and rural youth. Ecosystems are not necessarily built into engineering alone. We are working on diverse industries like fisheries, handloom, agri-tech, and because we have more than a 400-kilometer coastal pipeline, that we have, that more than 400 kilometers of coast is becoming the blue economy for many of the startups in the state today. One of the three ingredients that we started was grassroots innovators called as Mission Shakti. What was Mission Shakti? Mission Shakti was a women's self-help movement that was moving towards becoming an MSME center. More than 70 lakh women were together built under Mission Shakti with 6 lakh self-help groups. And each of these self-help groups are moving forward to becoming MSMEs of their own rights. The bottom of the pyramid. Women who could not walk out of their houses, who were not considered as people who could go and build economic platform, were given the privilege and the opportunity that they can go out and they can take care of themselves, build capital and be able to build businesses. I come to the Northeast model, the resource to market model. States like Assam and Meghalaya are helping entrepreneurs convert local strengths such as bamboo, spices, tea and tourism into branded products for global markets. The ecosystem is based on identity, sustainability and scale. Usually as entrepreneurs we want to scale, naturally so. The bigger the scale, the bigger the sustainability. Bigger the sustainability, bigger the cash cycle. Bigger the cash cycle, bigger the profitability. Bigger the profitability, bigger the valuation. Bigger the valuation, bigger the funding, and the cycle continues. It's a process. One aids the other. But here, they're not looking at scale, they're looking at identity and recognition, and they're happy not building it to scale. So there are different models.
I'll just close with my final thoughts on global learnings to complement India's state models. Now, Silicon Valley is something that has been spoken about ad infinitum, and I'm not going to take my time there. I'll go to Israel. Israel shows a state as a risk taker where the government co-invests in early stage deep tech and de-risking innovation. Today you talk about radar technology, where is it coming from? Israel. Today you talk about many of the satellites that are using software, where does it come from? Israel. You talk about irrigation and drip irrigation facilities to provide fruits and vegetables in the desert, it's Israel. How does it do that? Does it have some rocket science? No. It's able to co-risk the government with the entrepreneurs. You go to Germany. It operates through the SME depth and export orientation, and the resilience comes from strong mid-sized entrepreneurs and not only unicorns. You go to China. It demonstrates the speed of iteration in hardware, proximity of design, suppliers, and manufacturing that shortens the cycle from idea to scale. And I will conclude here. My 8 minutes are over. Why we at times find it difficult as entrepreneurs to probably build what we are wanting to build. The thing starts from an idea. The ideation leads to options. Options leads to prototyping. Prototyping leads to market research. Market research leads to further prototyping. Then it comes to scale. Once it comes to scale, you need funding. You go for series funding. Once you've done the series funding, you go to the market. You deploy. You get your value. There are learnings. You reiterate this entire cycle from the drawing board to the market, and the stronger you get, the more clearer is your vision. So ladies and gentlemen, as I conclude, let me only request all my young friends who are from the entrepreneurial world. No one can teach entrepreneurship. It's a spirit. Even today, you always have the luxury of going back to a comfortable job. Most of the business schools, like Dr. Anand is here from IIM Ahmedabad. I used to be a professor at Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, XIMB. And we teach students to get jobs. MBAs need jobs, but you have skipped it. You said, no, I don't need a job. I will build something for myself, however risky it is. I think that's a great trait. Great nations are never built on jobs. Great nations are built on entrepreneurs like you. And that is why you are important to building India. If we talk about a $5 trillion economy, it cannot be built without you. If you want to become a $24 trillion economy by 2047, it cannot be done without you. The innovation and the ecosystem that you develop will drive this nation forward. And that is why there are many learnings, but whatever is suitable for you, please do that. I thank you again. Thank you, Dr. Patra, for sharing your wisdom with us. Next, I would like to invite Mrs. Rashmi Singh, Secretary of Women and Child Development, Government of National Capital of Territory, to now share a few words with us. Jammu and Kashmir and Andaman and Nicobar, I did both. So I was really happy. Apart from obviously my native place, which is Bihar. So besides NCT of Delhi, the kind of experiences which I probably always reflect upon, draws from what I've seen across the country, be it Bihar or Uttar Pradesh, where I could, again, see quite a few, learnings, especially women-led business. So I will try and bring that canvas, but before that, I would be failing my duty if I don't thank the organizers and I don't compliment them for having organized this wonderful summit.
which for me it was a surprise when Abhishek Kumarji and Ashok ji, when they came and invited me, and also having brought the best of minds probably in the country, representing the kind of experience which is very, very important for the entrepreneurs today and also those in the policy making arena today. So when I heard about this, I was really happy, and the Bharat Entrepreneurship Summit being the fourth, and that kind of brings me hope. I can't see Abhishek ji. Where is Abhishek ji? Abhishek ji cannot be seen right now. So that really kind of gives me hope that so much of promise lies in people's own ability to bring together the various stakeholders which are so critical to bringing and making the kind of ecosystem which Dr. Patra just spoke about. Because the kind of ecosystem, the spectrum which he introduced us to, taking us from various state to state practices, good practices, it's all about actually building, a climate, building an environment, where entrepreneurship can flourish. And especially in this particular panel, when I talk about women enterprise, women entrepreneurship, and some of the good practices in the country and outside the country both. So, for women in particular, the ecosystem is something which holds more of, critical nuances than what meets the eye. Why I say it? Even today, for example, when there were people coming on the stage to get the awards, now how many women did we notice who came up on the stage? 20%? So, but I'm still glad that there were 20% who were women entrepreneurs, who were awarded for having braved all the odds, for having not only broken lot of gender stereotyping, probably, when I say gender stereotyping, there are many social practices which probably preclude the entry of women into this entrepreneurial competitive, climate, and yet you made it. So my heartiest congratulations to many, many women who made it here. With the hope that next time the 5th Entrepreneurship Summit will have 50% of women who will come up on the stage to receive the prizes. And lot depends upon us, who are successful in our own way in terms of having come here to receive the award, and how much you are able to disseminate. What is it which took you to come up here? So sharing those stories is very, very important. Now for me to share some of the stories which I thought would be relevant. Say a place like Andaman and Nicobar Island. Now there are women who were into looking for opportunities without actually looking at a lot of local resources where there were plenty of opportunity. For example, coconut itself. Now there were women entrepreneurs at that point of time as secondary industries that we happened to have confidence to work with, and they could start manufacturing units of virgin coconut oil. So there was again a huge demand, a huge market waiting to get tapped, but women who would not otherwise come forward to realize that there are opportunities galore, right in their own milieu. Or for that matter, calling a set of trainers from Mumbai. I remember it was a very interesting project, and supported by the Government of India under innovative practices. And the trainers came, looked at all the natural resources around, and women can turn the coconut shells which were lying all around into beautiful jewelry, into beautiful decor. And even today, when you go to Sagarika, which is our industry, there runs this cottage emporium called Sagarika here at Baba Khadak Singh Marg. So those products also started making entry to Sagarika.
or opening up a Sagarika outlet at, say, the famous Havelock Island. So opening it up there, so I realized from my experience that a little bit of stimuli from the government, that is indeed important if we have to take these good practices to scale, if we have to take the potential up in terms of, actually being able to unleash the local potential, little bit of stimuli from the government, because we have from the parliament represented here, Dr. Patra. So I think as a policy, very important, even when we talk about the Women's Collective, like you spoke about Mission Shakti, or for that matter, when you look at the number of women's collectives all over the country today, look at the huge number, maybe 10 crores or so. So this huge number, they are out there, out to do women-led business, many of them very successful, but many of them probably needing little stimuli in terms of policy support. For example, the normal tender, women are often not able to, these self-help groups, not able to compete. So in some of the good practices that we find, in states like Kerala, they had policy defined where women-led small business could be factored into, say, healthcare, early childhood care, midday meal, Anganwadi services. Now, food is a good business, traditionally so, for women. And as the former UP Chief Secretary said, agri-business. So where does agri-business also lead to? Maybe a lot of value addition possible in food itself. Now, turning that art, which has traditionally been known to be women's forte, into business where opportunity lies not just in India but globally. How? By maintaining good quality. How? By maintaining, knowing how to brand, knowing how to come up with a story. So all these things, there are umpteen opportunities for women. Number two is also, when we say healthcare, it's also beauty care, beauty and wellness. So there again, I saw that a lot of opportunity waiting to get tapped. In my own experience, in Delhi itself, Delhi Secretariat, the canteen, which was being run by some corporates before, we tried a new model of Istri Shakti canteen, given to a group of women to run it. And in no time, it was a turnaround story. And there were people who would come from far off places, to ask more women group to start doing their canteens. And this is something, wherever, whether in J&K, or in Uttar Pradesh, where I was leading an organization called Akanksha, which is the UP IS Officers' Wife Association. So from Akanksha, we could go district to district, looking for these kinds of small business opportunities. And so many places, the district magistrate, the DC complexes, there are so many, public, जहाँ पे जनता की सुनवाई के लिए दिन भर लोग आते हैं, तो अपॉर्चुनिटी इतना था कि वहाँ भी हम लोगों ने महिलाओं का कैफे, आकांक्षा स्टोर, इस तरह की चीजों को खुलवाया। आकांक्षा मसाला बहुत फेमस है, लखनऊ कोई जाएगा तो वहाँ पे अभी भी जो लोग लखनऊ से आए हैं तो वो अभी वहाँ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स भी जाती हैं कि हम तो वहीं की चीजें खरीदेंगे घर घर तक। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम लोग आकांक्षा हाट के लिए इनवाइट करने गए तो उन्होंने कहा कि आकांक्षा में जो मसाला बनता है या जो नमकीन बनता है, मठरी बनता है, वो यहाँ तक हमारे जो मुख्यमंत्री आवास के जितने लोग दिन भर मिलने आते हैं वहां भी वो चीज जाती है। सिमिलर दिल्ली में ये जो कैंटीन है, स्त्री शक्ति कैंटीन, इसको देख करके पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर वहां से भी लोग आए, 3 मूर्ति से भी लोग आए कि हम भी विमेन लेड कैंटीन स्टार्ट करेंगे। केरल का जो एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी, मैं खुद देखने गई कुडुम्श्री। We are all familiar कि कुडुम्श्री is like women led business, but in various kinds of portfolios, including waste management. Now, municipal bodies say waste management का contract जब महिलाएं लेती हैं, सफाई भी होती है और साथ ही साथ जो है उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत सारी चीजें उसी से निकल करके आती है। इंदौर आपने सुना होगा, इंदौर is a good model, the cleanest city. Now, how does it become clean? Not by just giving a mechanical contract to huge large
vendors, but it's small set of, small business opportunity being seen by a lot of women in waste segregation, and after having done the waste segregation, also being able to market the same. So the revenue which comes is from the marketing, something like a waste. So why I'm giving these examples is, the opportunities which are there may be getting utilized, used by large set of women, but when we look at the entire gamut which is there, especially rural India, I'm sure that it's, huge untapped wealth which is lying there to be turned from story to rags to riches. Why I use the word story? Now one of the international examples, Grand Canyon, I don't know how many have been to. On the way, I just stopped at a place with a beautiful board, with a set of women who were selling jewelry. Local jewelry, but it came with a story. Why? Because it was a set of indigenous women. वहाँ पे local जो tribal women, वो उस ज्वेलरी को बना रही थी, और जो हम $1 का उसका वर्थ होगा, वो $20 में बेच रही थी. वो मैंने उसको खरीदा $20 में. क्यों? क्योंकि कहानी के साथ थी. Now women, we remember our grannies telling us stories. So women are very good at, conveying, communicating stories generation by generation. So those oral traditions getting documented into a business enterprise. So because that jewelry came with a story, I bought that. So that again is a huge opportunity. I find that women's making, amazing products, be it in Jammu and Kashmir. I was the principal resident commissioner for Jammu and Kashmir here in Delhi, where we started a practice called, it was a heart, somehow heart. Now in that heart, calling women from Pulwama, Doda, Kupwara, name it, all the, very, very difficult places, and where women would normally not get an opportunity to be able to tell their story, they were called. And I tell you, they got such a good market, not just for those 10 days that they were there, but huge networks and connections, which, opened up huge markets for them in times to come. Why? Because it came with a story. Pashmina, Ari work, Yarkani work. Now, how does it get done? How much time does it take? How tedious it is? How do you differentiate between a machine-made thing and something which is handmade? I'm really glad organizers have chosen something hand-painted from Madhubani, which many of us got right now. So, that it comes with a story again. So, I will end now. Having said about these positive things, there are challenges, ecosystem, unless it is holistic, in terms of looking at what is becoming a barrier. Is it the transport? Is it the safety? Is it access to credit? Is it the need for a network, a supportive network? Like you have these associations. You have associations which are, actually able to help women business to grow. Whether you have like FICCI lady organization, but maybe more elitist in terms of the access which many other women who are struggling out there would need. So the need for networks, the need for social capital, the need for working capital, the need for seed capital, the need to be able to access the market using the emerging technological opportunities which are there now, through e-commerce. So there are all these huge opportunities which are there. At the same time, some of the policies to build our ecosystem also requires enabling mechanism like having more creches. I'm happy to say that in my present act of Women and Child, these are some of the things that we are also seeing. Can we have more creches for working women, for women who would like to put the children, into safe places, then be able to work, or more working women in hospital. So these are some of the things based on which I am proud to say that in Viksit Bharat, the women-led development, which is a huge promise, will all be possible if we collectively work towards it. Thank you. Thank you, ma'am. Your words were indeed enlightening. Next, may I please request Mr. Saurabh Shah
IPS Executive Director at Power Finance Corporation. Please deliver his speech. Very good afternoon, everyone, and very good afternoon to distinguished guests on the dais, members here present in the auditorium, and speakers from the first session, session. I'll also thank the organizers for consistently working towards the goals of entrepreneurship development and organizing these summits. So, to the time. My background, I mean, I'm not the police services, but for the last couple of years I've been into other sectors, including coal, railways. Now I look after power, and I believe that this is one sector where there is ample learning. So I understand that the audience here is mainly, I mean, there's a lot of startup activities which is happening in the primary sector, but I have more context of the RE sector or the energy sector, where I again see that there is a, even though I mean, on the face of it, we'll see that the energy sector is more of a capex intensive sector, so it requires big ticket investment. But there is plenty of scope for innovation, especially the IT initiatives. What we have realized is that while bigger companies might be better at doing things which are more voluminous, which are the old kind of capex, but when it comes to IT, when it comes to network, when it comes to understanding and appreciating technology and quickly changing or adapting to newer technologies. So they realize that smaller companies, newer startups, fresh engineering graduates, they are a good bet. I mean, there is less premium attached to their product. They are able to understand. I mean, there are fewer layers between the actual product and the final market. So when it goes to a big corporation, obviously what happens is that there are layers of marketing, business development. There is a premium attached to the overall. There is a risk. Element that they add to their products, the insurance cost. So finally, the product that actually reaches the user, the distribution company, is much more expensive than it should be. And while power is a regulated sector, everything you put in the capex will actually become a part of the tariff. That tariff will be fed into the manufacturing sector. Goods will become expensive. That will add to the inflation, and ultimately the export potential of the country will suffer. So while I mean it is in many ways an input sector, but essentially just like transport, logistics, power is an equally important sector where everything you do has an effect on the overall economic landscape of the country. So I was present for the first session, and now I've realized, I mean, there are certain things that is common to everyone, and everyone has been thinking about those things. That is the timeliness of permissions. So as a country, because of the manner in which we began, we started as a country. In contrast to say US, where there is less institutional memory, there is less legacy. It's a new nation which was built. I mean, the founding fathers of the USA had very different goals. They looked at a society which was much more egalitarian, and trade or business was never frowned upon. It was never looked upon as a non-mainstream activity. Whereas in India, for the last 50, 60, 70 years, as a nation, there has been a certain, ideology shift, policy shift, whether we are guided by socialist principles or capitalist, or we are a mixed economy. So both the economy and the social polity of this country has been undergoing some kind of a shift, and it's a product of the legacy that we have of the thousands of years of the oral history or whatever we have. So, but I think now after 75 years, we have a fair understanding of who we are. Also the kind of demography that we have, young population, the median age being around 30. If you don't work hard enough, if you don't develop fast enough, so we might become a rare country before we become developed. So there is no choice but to develop, work harder, develop, and for that, government is a big stakeholder. Government continues being a big stakeholder, no matter how much there has been an effort to reduce, and it is likely to stay an important player for the next 10, 20, 30 years also. So the role of government has been shifting from that of a pure regulator and an administrator to something of a facilitator. We sense it from inside the government. Probably outside the government, the feeling will be less positive in the sense, there will be some frustration about permissions, delays, and the kind of deadweight that brings to the economy is enormous. Because when you look at the way work is available in small town India or even in big cities, if you look at a transport tender, everyone will be quoting very cutthroat prices. But even these prices are
far above the international standards. That is because we have inbuilt efficiencies, and everyone who is bidding at the best possible available rate based on the tools they have, and they make a average IRR, they make a IRR of 10 or 12%. It is nothing exceptional they are making. The reason is, I mean, the lack of innovation and the gap between the actual product cost and the final delivered cost because of the time delays, because of the, for instance, land. Land should not be the fulcrum of decision making. Unfortunately, here, I mean, it becomes a fulcrum of decision making. In a North Indian state, if you want to start a big enterprise or a medium enterprise, you want to aggregate 10 or 15 acres. That's a Herculean task. And I mean, if you spend 1 or 2 years in aggregating that land alone, when do you go for the financial closure? When do you go to the banks? When do you get the... So, I mean, all that feeds into the final product cost. The non-availability of risk capital. Every big idea, every kind of disruption is built upon risk capital. Money which might be lost to the idea alone, but that risk capital is in short supply in this country. We have structured finance. I work in a company where we provide plenty of structured finance to ideas that work. For instance, solar. I mean, if there is a project with a definite revenue stream, there is no problem in providing financing now. So finance is available, but for products which have a structured payment security mechanism. And this increasingly, I mean, becomes wherever there is a government as a concessionary. So even if there is a private sector player, the attempt of the private sector player becomes to get a government contract and not work in the market economy